EKYC. Why? To get their wages. Leave that aside. For those of you who've downloaded the document, as I said, we'll be interactive, Budget Speech 2026. Then let's do a search on that document and put in some search words. Put in the word middle class. Go ahead, put it in. For middle class, 2 points. 4 out of 5 Indians are earning less than 171 rupees a day. Net household savings fell to the lowest in the last 50 years, the Indian middle class. Let's do the second word on the search document. Go search. Unemployment. And I speak with confidence because my state, we're not the best. We're the 5th lowest when it comes to jobless rate, Bengal. What does the national figure look like? 1 out of 3 youth are not in education, employment, or training. Please. 1 out of 3 youth are not in education, employment, or training. 1 out of 4 positions in the union government are vacant. And the PM internship scheme, for every 100 rupees kept, 5 rupees was utilized. So we are starting a youth scheme in Bengal. Just started. 24 to 40 years, you put 1,500 rupees into your bank account. All set, sir. In fact, in true federalism, you don't have to copy states. I'm not asking you to copy. Kanyashri, we started in Bengal 2013. You started Beti Bachao a few years later. Swasthya Sati was started in Bengal. 2 years later, you started Ayushman Bharat. Good, sir. And you're not copying Bengal. No. You're only being inspired by Bengal, which is very nice, sir. So now let's come to another word, falling rupee. Search it. There's a wonderful quote, not said by the Prime Minister. Somebody else said it. I'll say it in English. The way the value of the rupee is falling, it seems there's a competition between the rupee and the union government. Whose prestige will fall faster? Unquote. The Prime Minister did not say this. The Chief Minister of Gujarat said this in 2013. So try these 3 words now on this interactive document. The word is Jan Dhan Yojana. 2 quick bullet points. 1 out of 4 Jan Dhan accounts are non-operational. 1 out of 10 Jan Dhan accounts are zero balance. This is not politics. Hard numbers. I hope the finance minister comes here and gives us these responses. Farmer suicides. Farmer suicides. Please, बैठ आप सीट पे बैठे. ये सही नहीं है. आप बिना इजाजत बोले बैठ जाइए आप. Please. हाँ बोले. आप बोले. Please. Please सीट पर बैठकर ना बोले. आपको मौका मिलेगा अपनी बात कहिएगा. The truth hurts. It's okay. Farmer suicides. Please put this down on your search document. And I know a few things about farmers. 26-day hunger strike for farmers in December 2006. Only one. Mamata Banerjee. Supreme Court 2016. Read what they wrote. 2020. 9 of us, 20 from other parties got suspended. We stayed outside. Why? Because we were fighting against the farmer bill, draconian. So don't tell us about farmers. And I'm wondering, why is the opposition, all of us, we're saying farmers are unhappy. Mr. Modi made farmers unhappy? Of course not. Of course he didn't. The farmers are happy. In Texas. Not in Tamil Nadu. The farmers are happy in Kentucky, but not in Karnataka. And the farmers are happy in Wisconsin, not in West Bengal. So you can carry on with these words. Environment and air pollution. Go search it. Nothing in the budget about environment and air pollution. Minorities. Yes, there's minorities. We were looking for minorities. The members in the National Commission for Minorities, nothing filled up.
FCRA, 2,000 of those FCRA accounts were run by Christian NGOs doing good work, shut down. Social minority, LGBTQ, nothing mentioned. Sir, look for rail safety. Sir, continuous catcalling. Sir, let's have a debate. As it is, the state president has been given a seat in the last row of the BJP, but don't disturb us. Sir, key in rail safety, we as a party objected to the railway budget being subsumed to the general budget, sir. We objected to it. I want to give you some data on rail. Federalism, search for it, you won't find it in the document. Sir, rail budget has grown 25 times since the UPA 2 regime, 25 times. This is deadly data. Watch this. How much has the budget increased state by state? Don't give it to me in thousands of crores. Give it to me on a base of zero, how many times? Gujarat, 29 times increase on railway budget. Who runs it? Delhi, 28 times. Chhattisgarh, Madhya Pradesh, 24 times. Maharashtra, 20 times. Uttar Pradesh, 18 times. Very good. Keep increasing. Tamil Nadu, 8 times. And you love Bengal so much, so what could we expect? 3 times. So the bottom line is, you owe Bengal 2 lakh crores of rupees. You owe Bengal 2 lakh crores of rupees. Sir, one of the great entrepreneurs of Gujarat, I've done a lot of reading, he's written somebody wrote a biography on him also, was Karsan Bhai Patel. He created a great Indian brand, Nirma. But now that washing powder Nirma is being used extensively by the BJP. You join the BJP and Nirma, 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 Nirma. This is the story, sir. I don't want to give the list of people who have applied this Nirma because I think it is one of the great Indian brands created in Gujarat for India, sir. Sir, the finance minister will reply in a few hours. But the real reply will come. 2 months wait in Tamil Nadu. 2 months wait in Kerala. Bengal, okay, wait. But the real wait will come in February 2024, February 2027, when led by Akhilesh Yadav, the people of Uttar Pradesh will also speak in February 2024. Sir, my colleague, done, conclusion, sir. My colleague and Lok Sabha leader, Abhishek, I'm finishing some of my conclusion. Abhishek Banerjee said something very interesting to which the finance minister, I hope she comes and replies. He spoke, inspired by Veer Das, he spoke about 2 Indias. And I conclude, sir. Please, please. Please, आपस में लो. Please, please. Nothing will go. Please, please. आप दोनों, please, please, please. आप सभी बैठे. Please take your seats. Please take your seats. Mr. Gotla, take your seats. Please, don't. Please, आप अपनी सीट. Please, अपनी सीट पर रहे. Please, Mr. Saket Gokhale, please take your seat. Please take your seats. हाँ, बोलिए. Conclude now. Conclude directly. Please, आप अपनी जगह बैठे रहे. Conclude it now. Conclude. 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 Sir, this is nice. This is nice because in class 5 in a primary school we learn. Conclude now. Truth hurts. Conclude. So it's okay, now, sir. conclude. We understand. Sir, I want to end. It's nice that the minister is leading the... Please sir, conclude. Come on the point. Sir, the finance minister, in response to what the opening speaker was said, we want to tell her, on to India's. Please, आप बैठिए, मैं देख रहा हूँ उस समय. Please, please.
आप जल्द कंक्लूड करिए, कंक्लूड करिए, Protect me, कंक्लूड sir. इट, कंक्लूड. Until, quote. प्लीज डायरेक्ट जी कंक्लूड करिए, मैं आगे बढ़ूंगा फिर. कंक्लूड इट. I'm two-line quote, that's it, sir. Quote, unquote, and sit You down. read 2 lines and I will. Thank you, sir. Please. First line, second line. Quote, until you understand the difference between what's written in the GST Act and what's written on a family grocery bill of a poor family, you will keep living in your India. Thank you. Let us live Thank in you. our India. Thank you, sir. Jai Hind, Jai Bangla. माननीय मंत्री प्लीज. इंट्रोडक्शन चाहता हूं. मैंने कुछ नहीं कहा, मैं तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर खड़ा था कि ये विद्वान मित्र जो इस सदन का सदस्य नहीं है उनका नाम क्यों ले रहे थे. हम अभी भी चाह रहे हैं उसको स्पंज किया जाए, इसकी कोई जरूरत नहीं. प्लीज प्लीज. माननीय श्री सामयिक भट्टाचार्य, माननीय सामयिक भट्टाचार्य, आपकी बात ही रिकॉर्ड पे जाएगी. श्री सामयिक भट्टाचार्य. Sir, firm to firmer. प्लीज आप From a, अपनी अपनी सीट पर प्लीज. सामयिक भट्टाचार्य. thank you, sir. अरे आप तो From बैठकर to- आप बैठे रहे Yes, ना, sir. चुपचाप आप सुने. सामयिक भट्टाचार्य Thank you, sir, for allowing me. प्लीज. From farm to farmer, from Agarbatti to AI, from business to bullet trains. This is a growth-oriented, comprehensive, progressive, futuristic budget. I am grateful and thankful to you, the Honorable Finance Minister, Srimati Nirmala Sitharaman, who presented it under the able leadership of Narendra Modi. Sir, I'm coming from the state of West Bengal. The farmers of Haryana are happy, but the farmers of Hooghly in West Bengal, they are unhappy. The potato farmers are committing suicide. Who is responsible for that? Sir, I'm coming from a state which is becoming a old age home. There is exodus of capital, exodus of students, exodus of labor, exodus of merit that is happening in West Bengal right now. Exodus. Sir, at this point of time, if we want an inclusive pan-India growth, we have to have a good federal structure and we have to honor it. Most unfortunate thing, what is happening in West Bengal right now? Those who are criticizing the central budget, being a Bengali, I am coming from West Bengal. What is happening in our state? State government has failed to expedite the land acquisition of Hashimara, Chhada, Kolaikunda airports, Malda airports development. Sir, no steps taken to establish the government medical college in Alipurduar, Dakshin Dinajpur, Kalimpong, Paschim Bardhaman. The land acquisition for integrated checkposts at Gojadanga borders, Gojadanga, Fulbari, Hili, Mahodipur. There is a precedent of non-resolution of land issues related 43 railway projects and 3 metro lines despite repeated central intervention. Son, in the year 2011, there was a change. One hegemony has been replaced by another hegemony. The moment the government came into the power, they have declared that government cannot and will not acquire a single square feet of land. Why the investors are not coming in West Bengal? Why there is no growth? Now that 14,60,000 qualified boys and girls working in Bengaluru, and Bengali is the second speaking language in
Bengaluru. It is Mamtaji's thing. Sir, delay in acquisition for a 100-bed ESI hospital in Kharagpur. 1,500 acres of illegal encroachment on defense land remain unresolved. 170 acres of illegal encroachment on prime port land remain unresolved. Lack of urgency in acquisition and the clearance for national expressway projects. Varanasi, Kolkata, Kharagpur, Morgram, Shiliguri, Guwahati, Jorat, Raksaul, Haldia, Visakhapatnam, Kharagpur, Morgram, Krishnaganj, Shiliguri, Gangtok, Korapur, Shiliguri. That there is a common slogan in West Bengal. मुझे चाइना बुलेट कार ममता दी यार एक बार, लेकिन इस बार सर वो बुलेट ट्रेन से ही उत्तर बंगाल से हम लोग तेजी से वाराणसी तक वही विश्वनाथ बाबा का पास भेज देंगे, अंतिम जीवन उधर शांत पे रहने के लिए। हर हर महादेव। सर बेरी पीएम सूर्यघर योजना, मुफ्त बिजली, PM Suryaghar, no free electricity for the poor. This project is not being implemented. Sir, energy security of this country is being compromised. The previous budget, the state government has given a clearance to the Oil India companies. They are not providing PML till now. That we, government of India has already spent more than 1,000 crore. But no development program, no expansion program is going on. After his speech, after his speech. Sir, in Jagadishpur, Haldia, Bokaro, Dhamra gas pipeline, 98.7% complete nationwide. Only the state of West Bengal, which is not being taking place because there is no intention of the state government to complete it or to clear it. Shame. Sir, I am mentioning few projects. PM Vishwakarma, PM Janman, PM Sri, PM J, PM FBOI, PM Kusum, PM Suryaghar, Smart Cities Mission, PM Asha, aspirational district programs, aspirational block programs, Enam, Swamitabh. These projects are not Sir, education and skill development sector. The state government has not applied for 10 new Kendriya Vidyalaya. Sir, it is a shameful matter. 55 government schools in West Bengal has implemented Vidyanjali out of 8,44,925 in whole India. Industrial and economic development. Rare mineral art found in Purulia. But the auction has not yet been taken place because state government is totally reluctant. Sir, Falta SEZ remains neglected. In Ashoknagar oil field and other parts of North 24 Parganas, where we are sitting on the hotbed of oil. But during last 6 years, state government did nothing for it. Sir, so far Makhana board is concerned, my learned friend is talking about the agriculture. The government has already funded more than another 60 crores for it. Now it is not a 30 crore project, it's a 90 crore project. Malda and Uttar Pinatpur can be the hubs for Makhana cultivation, but without any action plan from the state, the central government is unable to release. Sir, जो लोग आपका सामने खड़े होकर बोल रहे हैं, ये इस बजट में तो कुछ नहीं है, सब लोग मर रहे हैं.
पश्चिम बंगाल में इतना जॉब अपॉर्चुनिटी है तो लोग बाहर क्यों जा रहे हैं? हर एक बात पूरा हाउस को सोचना चाहिए कि आज हम लोग 140 को पार कर गया, एंड सो फॉर द वेस्ट बंगाल इकोनॉमी इज कंसर्न आवर पार्ट, not only West Bengal, Bihar and Jharkhand, we are facing a silent demographic invasion on us. The entire demography of the border regions have been changed. Not only is West Bengal, but in Pananchal and Bihar and Jharkhand, Pananchal and Shimanchal of their states. Sir, one fine thing is that there is only one Dhritarashtra in Mahabharata, but we have found 7 Dhritarashtra in West Bengal voter list, sir. 7 Dhritarashtra. ये 7 लोगों को तो ढूंढ कर निकाल कर इसको तो पद्म विभूषण दे देना चाहिए। इतना वीरवान पुरुष आज पश्चिम बंगाल में है, इसके लिए हम लोगों को कुछ तो करना चाहिए। आज जो आपका सामने खड़े होकर बजट का आलोचना करते हैं, उसको एक बार पूछिए क्यों पश्चिम बंगाल से लोग काम के लिए बाहर जा रहे हैं। एक वो जमाना था जिस समय उत्तर प्रदेश बिहार से लोग आते थे बंगाल में काम की खोज के लिए। आज वो जमाना आ गया जब हम लोग बाहर में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? आयुष्मान भारत को एक्सेप्ट नहीं किया। अगर कोई भी माइग्रेंट लेबर बाहर में जाकर के किसी मुसीबत में फंस गए तो उसका क्या होगा? उसका स्वास्थ्य साथी कार्ड उधर नहीं चलेगा। आज हिंदुस्तान के किसी भी कोने से कोई भी बांग्लादेशी पकड़ा गया तो उसका पास से जो भी आधार कार्ड आपको मिलेगा वो मिलेगा। वो बोल रहे हैं वो मिल रहा है पश्चिम बंगाल से मुहैया करा दिया गया। 4 स्टेट्स है। इट इज नॉट मी, इट इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दे हैव स्टेटेड 4 years back that 72% of the fake currency are coming from West Bengal and from a particular place, that is Kaliachok of Malda district. These are the situations. That we have been loan organization. We have been fighting tooth and nail against this infiltration. जो लोग एक बार इस देश को छोड़ के चले गए थे, जो लोग नारा लगाए थे हंस के लिए पाकिस्तान लड़के लेंगे हिंदुस्तान, minority has a right to self determination. We want the right of self determination. जो इस देश को खंडित करके चला गया, जो वंदे मातरम को खंडन करके जो इस देश को भी खंडित कर दिया, जो लोग आज वही लोग हमारा सामने आकर इसका ऊपर आलोचना कर रहे हैं। हम चाहते हैं पूरा सदन को यह सोचना चाहिए, समय आ गया है जो केंद्र और राज्य के बीच में कोई कॉन्फ्रंटेशन नहीं, वो एक समन्वय का भावना लेकर काम करे। सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना, सिर्फ मोदी जी को विरोध करना है, मोदी जी को छोटा दिखाना है, इसी का कारण आज सारे के सारे प्रोजेक्ट जो यहां से भेजे जा रहे हैं उसको रोक दिया जा रहा है। अगर नाम बदला जा रहा है, सरकार बोल रहे है हमको रुपया चाहिए, 2 लाख करोड़ रुपया बाकी है। किस चीज का बाकी? ये उसका डिमांड नहीं है, ये उसका स्टेटमेंट है। 2 लाख रुपया कैसे, कहां से? ये बोल रहे हैं हम लोग रुपया लेंगे मगर हिसाब नहीं देंगे। लेना हमारा अधिकार क्षेत्र में आता है लेकिन हिसाब देना हमारा भास नहीं है। इसीलिए आज हमारा हालत इसी जगह पे पहुंच गए। सर हमारा आपका पास हमारा एक ही विनती है, जो लोग आज ये एक्सोडस के लिए दायी है, आज सारे लोग बंगाल छोड़ रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं? आज इतना किसानों ने क्यों आत्महत्या किया? फैक्ट्स तो सामने नहीं आ रहे। इन ब्रिटिश इंडिया जब किसान मर जाते वो लोग बोलते थे मृत्यु का कारण कोई खाना नहीं मिलना नहीं है, मृत्यु का कारण होता है मेल न्यूट्रिशन। एंड इन इंडिपेंडेंट इंडिया व्हाट वी आर डूइंग, जब भी पश्चिम बंगाल में कोई किसान आत्महत्या कर लेते वो बोलते हैं इसका कारण है उसका मानसिक अवसाद, इसका कारण है उसका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, that is why he disturbed and committed suicide. That cannot be, will not be accepted in any society, sir. Now what they are saying, ये लोग बोल रहे हैं ये बजट के से पश्चिम बंगाल को कुछ नहीं मिला। फ्रेट कॉरिडोर किसको मिला? गर्ल्स हॉस्टल किसको मिला? 43 रेलवे प्रोजेक्ट्स बीइंग स्टॉल्ड।
बाय दिस गवर्नमेंट। ये सरकार का कोई नीति नहीं है। ये घोषणा कर दिया था कि सरकार कोई जमीन एक्विजिशन नहीं करेंगे। आज लोग मर रहे हैं और माननीय गृह मंत्री, माननीय हमारा वित्त मंत्री आज नहीं है। मेरा एक प्रेयर है, इट इज माई प्रेयर टू हर ऑगस्ट सेल्फ सर, कि हम लोग जो यहाँ बैठे हैं वी आर सेम फेटर्निटी, हम लोग सभी राजनीति करता है। अगर राजनीति करते करते किसी का हत्या हो जाता है तो उसके लिए भी एक फंड का एलोकेशन होना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस ही कितना कार्यकर्ता मारे गए, उधर बैठे हुए कांग्रेसी लोग कितना लोग मारे गए, उसको भी कुछ मुहैया देना चाहिए। ये ब्रिटिश कहाँ गए, जॉन ब्रिटिश बन गए तो नहीं, वो है ये कम्युनिस्ट पार्टी, दे वर बर्न्ड अलाइव इन पंचायत इलेक्शन, वन कपल, क्या उसको भी कुछ करना चाहिए? हमारा 300 कार्यकर्ता का बलि हो गया, पोस्ट पोल वायलेंस, इससे कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होता। लोअर जुडिशियरी इज अंडर थ्रेट, टोटल एब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, टोटल एनर्की, टोटल ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। इसी का कारण आज ऐसा स्थिति आ गया है। आज पोस्ट पोल वायलेंस पे विद इन 27 days from the 2nd May 2021, 56 BJP workers have been killed and 27 female our workers have been raped. If this kind of law and order situation, who will come to invest West Bengal? 3,600 company, they have shifted their headquarters from West Bengal to other places. This is the present situation, sir. सर, हम लोगों को बचा लीजिए, लेकिन ये तैयार है सर। 1 मिनट सर, अभी ये जो इंक्लूसिव कोर्ट का बात बोले, एक लाइन वो हो जाएगा सर, निश्चिंत रहिए, हो जाएगा। गंगोत्री से गंगा सागर तक और डबल इंजन का सरकार बनेगा। थैंक यू। साकेत गोखले जी, पॉइंट ऑफ ऑर्डर था कुछ आपका? यू हैड सम पॉइंट ऑफ ऑर्डर? Point of order, you had something? Yes, sir, under Rule 110. 110. Sir, the entire, this is not West Bengal Assembly. Thank you. He wasn't speaking on the union budget, sir. Thank you. That is the submission. Shri Mukariya Ram Bhai ji, Bani Shri Mukariya Ram Bhai. सब 10 मिनट या 5 मिनट? 10 मिनट 10 मिनट समय आप। આદરણીય ઉપાધ્યક્ષ મહોદયજી, આપે મને મહત્વપૂર્ણ વિષય ઉપર બોલવા માટેની તક આપી તે બદલ આપનો આભાર માનું છું। આજે હું અહીં ભારતના કેન્દ્રીય બજેટ 2026 પર મારા વિચારો રજૂ કરવા માટે ઊભો થયો છું। આ બજેટ મેં માત્ર આંકડાનું નિવેદન નથી, પરંતુ એક વિઝન છે। શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વ હેઠળ સરકારના દૂરદ્રષ્ટિપૂર્ણ વિઝનનું પ્રતિબિંબ છે। સુશ્રી નિર્મલા સીતારમણ, ભારતના માનનીય નાણામંત્રી શ્રી, આ બજેટ રજૂ કરીને ફરી 9મી વખત બજેટ રજૂ કરી ફરી એકવાર તેમની ક્ષમતાને, નિપુણતાનું પ્રદર્શન કર્યું છે અને તેમની આ નીતિ દ્વારા ભારતને વિશ્વના સૌથી ઝડપી વિકસિત અર્થતંત્ર તરીકે પ્રસ્થાપિત કરવાનું મહાન લક્ષ્ય હાંસલ થઈ રહ્યું છે। હું તો મારા મતે એવું માનીશ કે ભારત દેશના એ ખરેખર લક્ષ્મીજી છે। એ ભારત દેશમાં જે લક્ષ્મીજી વસી રહ્યા છે એમના કૃપાથી વધારે લક્ષ્મીજી વરસે છે। શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વમાં છેલ્લા 10 વર્ષોમાં ભારતે અભૂતપૂર્વ પ્રગતિ કરી છે। જ્યારે વિશ્વ અર્થતંત્ર કોવિડને હિસાબે ભૌગોલિક તણાવોને કારણે ડગમડાઈ રહ્યું હતું, ત્યારે મોદી સરકારે આત્મનિર્ભર ભારત અને વિકસિત ભારતના મંત્રથી દેશને નવી ઉર્જા આપી છે। આ બજેટમાં રોકાણ, રોજગાર, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પર ખાસ ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે, જે 2047 સુધીના વિકસિત ભારતનું સ્વપ્ન સાકાર કરવાનું મજબૂત પગલું જઈ રહ્યું છે। માનનીય વડાપ્રધાનશ્રીની નીતિઓને કારણે અનુશાસનને સુનિશ્ચિત કર્યું છે। બજેટ ખાત ઘટાડીને મૂડી ખર્ચ વધારી સરકારે વિકાસના એન્જિનને પેટ્રોલ પંપ કર્યું છે। આજે ભારત વિશ્વમાં 5મા ક્રમનું સૌથી મોટું અર્થતંત્ર છે અને બજેટથી તે 3જા ક્રમે પહોંચવાનું લક્ષ્ય નજીક આવી ગયું છે। શ્રી મોદીજીના સબકા સાથ, सबका विकास, सबका विश्वास गोखले जी गए, वो साबरमती के संत करके आ गए थे। वहाँ मंत्री गरीब थी गरीब सुधी विकासना लाभो पहुंचाड़िया छे।
જીએસટી, ડિજિટલ ઇન્ડિયા, મેક ઇન ઇન્ડિયા જેવી યોજનાને તેના પ્રમાણપત્રો છે. સુશ્રી નિર્મલા સીતારમણની આ બજેટ ઘોષણા તે તેમની નાણાકીય કુશળતા અને દૂરદ્રષ્ટિનું ઉત્તમ ઉદાહરણ છે. તેમણે બજેટમાં પર્યાવરણ મૈત્રીપૂર્ણ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, ડિજિટલ અર્થતંત્ર, સ્માર્ટ સિટીઝ પર ખાસ ધ્યાન આપ્યું છે. તેમની નીતિઓથી યુવાઓને રોજગાર, કૃષકોને MSP, મહિલાઓને સશક્તિકરણ મળ્યું છે. આ બજેટ રેલવે કેપેક્સ 2,77,830 કરોડનું બજેટ આપીને પરિવહન ક્ષેત્રે નવી દિશા આપી છે. આ ભારત દેશના ઇતિહાસમાં પહેલી વખત આવું થઈ રહ્યું છે કે 2,77,830 કરોડનું બજેટ રેલવે માટે મળી રહ્યું છે. સીતારામણજી પર્યાવરણ અને ટકાઉ વિકાસ પરની ચિંતા પર પ્રશંસનીય છે. તેમણે ગ્રીન બોન્ડ્સ અને રિન્યુએબલ એનર્જી પર રોકાણ વધારીને ભારતને કાર્બન ન્યુટ્રલ બનાવવાનું લક્ષ્ય મેળવ્યું છે. એમની આ કાર્યશૈલી શ્રી મોદીજીના વિઝનને પૂર્ણ કરે છે અને ભારતને વૈશ્વિક નેતા તરીકે સ્થાપિત કરે છે. આ બજેટમાં ગુજરાતને વિશેષ સ્થાન મળ્યું છે, જે વિશ્વના સૌથી ઝડપી વિકસતા રાજ્યો વિશ્વના દેશમાંનું એક છે. ડંકુની પશ્ચિમ બંગાળથી સુરત સુધીનો નવો ડેડિકેટેડ ફ્રેઇટ કોરિડોર જાહેર થયો છે, જે ગુજરાતના પોર્ટ્સ કંડલા, મુન્દ્રા, હજીરા અને પૂર્વ ભારત સાથે જોડશે. કોરિડોરથી ગુજરાતના ઔદ્યોગિક કેન્દ્રો જેમ કે જામનગર, મોરબી, રાજકોટ, અમદાવાદ વગેરેને લાભ મળશે અને વિકાસથી રોજગારના લાખો અવસરો ઊભા થશે. અમદાવાદ મુંબઈ હાઈ સ્પીડ રેલ કોરિડોર, આ કામ પણ ઝડપથી ચાલી રહ્યું છે. ગુજરાતના રાષ્ટ્રીય કનેક્ટિવિટીનો હબ બનાવશે. આ પ્રોજેક્ટથી ગુજરાતના ટેક્સટાઇલ, કેમિકલ, ડાયમંડ ઇન્ડસ્ટ્રી નવી માર્કેટ મળશે. ગુજરાત સરકારના સહયોગથી આવા પ્રોજેક્ટથી રાજ્યનું લગભગ GDP 15% વધશે અને ગ્રામીણ વિસ્તારોનો પણ વિકાસ થશે. આ બજેટનું સૌથી ઉજ્જવળ પાસું છે 7 નવા હાઈસ્પીડ રેલ કોરિડોરની જાહેરાત. જે કોરિડોર છે મુંબઈથી પુણે, પુણેથી હૈદરાબાદ, હૈદરાબાદથી બેંગ્લોર, હૈદરાબાદથી ચેન્નઈ, ચેન્નઈથી બેંગ્લોર, દિલ્હીથી વારાણસી, વારાણસીથી સિલિગુડી. આ 4,000 કિલોમીટર નેટવર્કથી લગભગ 16 લાખ કરોડનું રોકાણ થશે, જે 5 લાખથી વધુ રોજગારો ઊભા કરશે. આ કોરિડોરથી મુસાફરીનો સમય અડધો થશે અને કાર્બન ઉત્સર્જન 30% ઘટશે. રેલવે મંત્રાલયને મળેલા 2.78 લાખ કરોડના કેપેક્સથી નવી ટ્રેનો, સ્ટેશન, સેફ્ટી સિસ્ટમ આવશે. ગુજરાતમાંથી પસાર થતા આ કોરિડોર્સથી અમદાવાદ, દિલ્હી સુધી માત્ર 3 કલાકમાં પહોંચી શકશે, જે વેપાર અને પર્યટનને વેગ મળશે. મને લાગે અમે અત્યારે અમદાવાદથી દિલ્હી આવીએ છીએ તો એરમાં 3 કલાક થાય છે કનેક્ટિવિટી વગેરે. આ ટ્રેનમાં 3 કલાકમાં દિલ્હી પહોંચી જશું. આ બજેટથી કૃષિ, MSME, ડિજિટલ ઇકોનોમી પર ખાસ ધ્યાન આપવામાં આવ્યું છે. ગુજરાતના ખેડૂતો નવા ઇરિગેશન પ્રોજેક્ટથી લાભ થશે અને સ્ટાર્ટઅપ્સને ટેક્સ છૂટથી ગુજરાતનું ગિફ્ટ સિટી વિશ્વ ક્લાસ બનશે. મહિલા સશક્તિકરણ અને યુવા રોજગાર પર પગલાંથી સમાજના દરેક વર્ગને લાભ થશે. કેન્દ્રીય બજેટ 2024માં ગ્રામીણ વિકાસને મજબૂત કરવા માટે રૂરલ ડેવલપમેન્ટ મંત્રાલયે 1,97,023 કરોડ રૂપિયાનું બજેટ આપવામાં આવ્યું છે. 1,97,023 કરોડ રૂપિયાનું બજેટ અપાયું, જે રોજગાર, આવાસ અને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પર કેન્દ્રિત છે. આ બજેટ ગ્રામીણ વિસ્તારમાં ગરીબી નાબૂદી, મહિલા સશક્તિકરણ, ટકાઉ વિકાસને પ્રાથમિકતા આપશે. શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સરકારનું સબકા સાથ, સબકા વિકાસ વિઝન સાકાર થઈ રહ્યું છે. બજેટમાં વિકસિત ભારત ગેરંટી ફોર રોજગાર અને આજીવિકા મિશન જી રામજી યોજના માટે 1,51,000 કરોડથી વધુ પ્રાવિધાન છે અને રાજ્યોના યોગદાન સાથે રોજગાર અને આજીવિકાને વેગ આપશે. પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના ગ્રામીણ PMYG માટે બમણી અંક વૃદ્ધિ કરીને 54,832 કરોડ આપ્યા છે. 54,832 કરોડ, જે 3 કરોડથી વધુ ઘરો નવા બનાવશે અને મહિલાઓને 74% માલિકી આપીને સશક્ત બનાવશે. પ્રધાનમંત્રી ગ્રામ સડક યોજના PMGSY માટે પણ ડબલ ડિજિટ વધારો કરી ગ્રામીણ કનેક્ટિવિટી વધુ મજબૂત કરવામાં આવશે. ગુજરાતમાં આ બજેટ કૃષિ, પશુપાલન, મત્સ્યોદ્યોગ, સ્વસહાય જોગ, ગ્રામીણ અર્થતંત્રને પ્રાથમિકતા
આપીને લાંબા ગાળાના લાભ આપે છે. દેશના 6.65 લાખ ગામોમાં દેશના 6.65 લાખ ગામોમાં જલ જીવન મિશનથી 2028 સુધીમાં વિસ્તારની 100% પાઇપ વોટર કવરેજ કરવામાં આવશે, જે ગુજરાતના ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં જળ સુરક્ષા અને આરોગ્ય સુધારશે. મહાત્મા ગાંધી ગ્રામ સ્વરાજ યોજના હેઠળ ખાદી, હસ્તતંત્ર અને હસ્તકલા મજબૂત કરીને ગ્રામીણ યુવાને રોજગાર આપવામાં આવશે, જે ગુજરાતના વિકાસને વેગ આપશે. સુશ્રી નિર્મલા સીતારમણજી ગ્રામીણ વિકાસને જ્ઞાન, ગરીબ, યુવાન, અન્યાય, મહિલા અને કેન્દ્રિત કરીને ગરીબીમાંથી લગભગ 25 કરોડ લોકોને મુક્તિ આપવાનું ચાલુ છે. હજી આગળ આ જ સિનારીઓ ચાલશે એટલે ધીરે ધીરે ગરીબી હટી જશે. કોંગ્રેસે ન હટાવી, અમે ખરેખર ગરીબીમાંથી બહાર લઈ આવવા માટે કરીએ. કોંગ્રેસે ગરીબોને હટાવ્યા એટલે એ પણ હટી ગયા છે. સી માર્ટ્સ દ્વારા લખપતિ દીદીઓને ઉદ્યોગ સાહસિક બનાવીને મહિલા સશક્તિકરણને પ્રોત્સાહન આપ્યું, જે ગ્રામીણ વ્યવસ્થાને ખૂબ જ મજબૂત કરે છે. આ પગલાંથી ગ્રામીણ વેતન વધશે, ઇન્ટરનેટ કનેક્ટિવિટી વિસ્તરશે, અસમાનતા ઘટશે, મોદીજીના વિકસિત ભારત વિઝનને પૂર્ણ કરશે. ગુજરાતમાં રેલવે કોરિડોર સાથે જોડાઈને ગ્રામીણ વિસ્તારો વિકસશે, રોજગાર અને વેપારને પણ વેગ આપશે. આખરે શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી અને શ્રી નિર્મલા સીતારામણ નેતૃત્વ હેઠળ આ બજેટ ભારતને વિશ્વગુરુ બનાવવાનું મહાન પગલું છે. ગુજરાત જેવા રાજ્યોને મજબૂત કરીને અમે અમારા સ્વતંત્ર 100 વર્ષ વિકસિત ભારતનું સપના પૂરું કરીશું. આપણે બધા મળીને, એટલે વિપક્ષ, શાસક પક્ષ, સૌ પક્ષ સાથે મળીને સરકારને વિઝનને સાકાર કરીએ. આવો સાથે મળી સૌ કામમાં લાગી જાય અને દેશને મહાન સત્તા તરફ લઈ જઈ રહ્યા છે, ત્યારે આપનું યોગદાન પણ આમાં અમૂલ્ય છે. માત્ર વિરોધ કરીને, વિરોધી વાતો કરીને નહીં, પણ સકારાત્મક સહકાર આપી અને આપ પણ અમારી સાથે જોડાઈ શકશો તો આપનો પણ ક્યાંક વિકાસ થશે. નહીં તો ધીરે ધીરે અવિકસિત ગ્રુપમાં ચાલ્યા જશો. ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ. Thank you. Honorable Shriman Govind Bhai Lalji Bhai Dholakia ji. सभापति महोदय, मैं श्लोक से शुरुआत करता हूँ. निर्माण मोहाजित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संज्ञेंग संत्य मुक्ता पदम व्ययम तत्. माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ कि आपने मुझे वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट पर अपना विचार रखने का अवसर प्रदान किया है. उपसभापति महोदय, यह कोई साधारण समय नहीं है. आज जब विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अस्थिरता के दौर पर गुजर रही है, तब माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने लगातार 9वीं बार बजट पेश कर न केवल एक संसदीय इतिहास रचा है, बल्कि भारत की आर्थिक सुदृढ़ता की पहचान पूरी दुनिया को करवाई है. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के दीर्घ दृष्टि से नारी शक्ति के सामर्थ्य का यह उदाहरण पूरे विश्व के लिए प्रेरणा रूप है. उपसभापति महोदय, ऋग्वेद में कहा गया है कि स्त्री ही ब्रह्मा बभूवित. स्त्री ज्ञान, निर्माण और सभ्यता का आधार है. निर्मला बहन जी ने इस बजट के माध्यम से इस सूक्त को चरितार्थ किया है. नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार पिछले 11 वर्षों से राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र उत्थान के संकल्प के साथ निरंतर आगे बढ़ रही है. प्रस्तुत बजट सबका साथ, सबका विकास और सबकी चिंता के मंत्र का जीवंत प्रचारण है. उपसभापति महोदय, यह बजट कर्तव्य भवन में तैयार किया गया पहला बजट है जो 3 मुख्य स्तंभों पर टिका है. आर्थिक विकास की गति को बनाए रखना, नागरिकों की आकांक्षाओं की पूर्ति करना और समावेशी विकास का विजन रखना.
उपसभापति महोदय, मैं सबसे पहले हमारे गुजरात राज्य और विशेषकर सूरत की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सूरत जो गुजरात और भारत की आर्थिक राजधानी के रूप में उभर रहा है, इस बजट में सूरत को भी बड़ी सौगात मिली है। पश्चिम बंगाल के डंकुनी से सूरत तक नया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाने की घोषणा एक गेम चेंजर साबित होगा। यह कॉरिडोर न केवल लॉजिस्टिक की लागत कम करेगा, बल्कि हमारे व्यापार को ग्लोबल स्पीड प्रदान करेगा। उपसभापति महोदय, वस्त्र उद्योग के लिए घोषित एकीकृत कार्यक्रम और टैक्स इको योजना सूरत के कपड़ा व्यापारियों के लिए वरदान साबित होगा। समर्थ 2.0 योजना हमारे युवाओं को मॉडर्न टेक्नोलॉजी से अपडेट करेगी, जिससे सूरत दुनिया के टेक्सटाइल मैप पर शाइनिंग स्टार बनेगा। उपसभापति महोदय, जय अनुसंधान विज्ञान के साथ इस बजट में आरडीआई फंड में दो गुनी वृद्धि की गई है, जो यह दर्शाता है कि भारत अब केवल उपभोक्ता नहीं बल्कि उत्पादक राष्ट्र बनने की दिशा में अग्रसर है। बजट में प्रस्तावित इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 भारत को ग्लोबल चिप हब बनाएगा, जिससे हमारी इलेक्ट्रॉनिक और रक्षा आपूर्ति श्रृंखला मजबूत होगी। उपसभापति महोदय, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, ये हमारी संस्कृति का मूल मंत्र है। पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार के दौरान हेल्थ सेंटर के बजट में 194% की वृद्धि की गई है। साथ ही इस वर्ष हेल्थ और फैमिली वेलफेयर का बजट 1 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक करना यह दर्शाता है कि सरकार के लिए नागरिकों का स्वास्थ्य सर्वोपरि है। बजट में कैंसर की 17 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी हटाना और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बजट में वृद्धि करना करोड़ों गरीब परिवारों के लिए जीवन दान के समान है। साथ ही MBBS और नर्सिंग सीटों में वृद्धि हमारे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को नई ऊंचाई देंगे। उपसभापति महोदय, इस बजट में कृषि क्षेत्र और अन्नदाता किसान की विशेष चिंता की गई है। कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने तथा किसानों की इनकम बढ़ाने और उनके जीवन में समृद्धि लाने के लिए इस बजट में कृषि क्षेत्र के लिए रिकॉर्ड 1,50,000 से भी ज्यादा एलोकेशन किया गया है। उपसभापति महोदय, हमारी परंपरा में ये कहा गया है कि राष्ट्र रक्षा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इस वर्ष रक्षा बजट में 15% से अधिक की वृद्धि हमारे सैनिकों के मनोबल को बढ़ाएगी। ऑपरेशन सिंदूर की पृष्ठभूमि में यह बजट हमारी सेनाओं के आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी हथियारों के निर्माण को नई शक्ति देगा। भारत अब केवल अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं कर रहा है, बल्कि एक ग्लोबल मिलिट्री पावर के रूप में उभर रहा है। उपसभापति महोदय, अंत में मैं यही
कहना चाहूंगा कि यह बजट केवल आंकड़ों का खेल नहीं, यह 140 करोड़ भारतीयों के सपनों का प्रतिबिंब है। यह बजट भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने का महामार्ग है। मैं इस ऐतिहासिक और जन कल्याणकारी बजट का समर्थन करता हूं और वित्त मंत्री जी को पुनः बधाई देता हूं। धन्यवाद उपसभापति महोदय। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू। ऑनरेबल श्रीमान मनन कुमार मिश्रा जी। माननीय मनन जी। माननीय सभापति जी, देश के टोटल बजट का साइज है 53.5 लाख करोड़। फिस्कल डेफिसिट 4.3% ऑफ जीडीपी। जिन विपक्षियों ने दबे स्वर से आलोचना की, खुल के बोलने की हिम्मत नहीं हुई इस बजट के खिलाफ, उनको बता दूं कि इस बजट का उद्देश्य है विकसित भारत 2047। आर्थिक वृद्धि बनाए रखना, विकास की बुनियाद को मजबूत रखना और जन केंद्रित विकास, विश्वास आधारित शासन व्यवस्था, व्यापार व जीवन सुगमता। मान्यवर, इस बजट ने युवा, गरीब, किसान और महिलाओं को सशक्त किया। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रोजगार के अवसर, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, हाउस होल्ड परचेजिंग पावर को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। इस बजट में भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। जीएसटी को सिंप्लीफाई किया गया। अब रिफॉर्म एक्सप्रेस को तेज गति देने के लिए कस्टम तथा डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेज में सुधार किए गए। कस्टम प्रोसेस में कई सुधार किए गए हैं। भारत को ग्लोबल बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM 20 लॉन्च किया जाएगा। सारी जरूरतों का सामान भारत में बनेगा। आत्मनिर्भर भारत बनाना है। उत्पादन, रिसर्च और माइनिंग को प्रमोट करना है। रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाकर उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे मिनरल रिच राज्यों को सपोर्ट करना है। केमिकल प्रोडक्शन बढ़ाकर आयात पर निर्भरता कम करनी है। इसके लिए 3 डेडिकेटेड केमिकल पार्क बनाए जाएंगे। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज के माध्यम से खादी और हैंडलूम उद्योगों को मजबूती प्रदान करनी है। 200 लिगेसी इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बनाकर उनकी गुणवत्ता को बढ़ावा देना है ताकि दुनिया के अन्य देशों के साथ साथ हम भी compete कर सकें। लघु एवं छोटे उद्योग MSMEs को चैंपियन बनाना है और इसके लिए 12,000 करोड़ के आर्थिक सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड के अलावा कॉरपोरेट मित्र का काडर बनेगा, खासकर टायर 2 और टायर 3 शहरों के MSMEs के जरूरतों को पूरा करने के लिए। मान्यवर, 20 नए नेशनल वाटरवेज अगले 5 वर्षों में कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम की व्यवस्था है हमारे बजट में। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स, शिक्षा, पर्यटन, खेल कूद को बढ़ावा, शिक्षा रोजगारोन्मुखी होगी। राज्यों के सहयोग से 5 रीजनल मेडिकल हब बनेंगे। 1 लाख अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल और 1.5 लाख केयर गिवर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। कैंसर, डायबिटीज और 7 और भी रेयर डिजीजेज, गंभीर बीमारियों की दवाएं सस्ती होंगी। इनके इंपोर्ट ड्यूटी कम किए जाएंगे। टैक्स के मामलों में काफ़ी सुधार किया गया है इस बजट में। पेनाल्टी के बजाय अब 10% और टैक्स देकर बहुत से प्रोसिक्यूशन से बच सकेंगे। अपील प्रोसेस के दरमियान कोई इंटरेस्ट लायबिलिटी नहीं होगा। IT सेक्टर को सपोर्ट किया गया है।
मोबाइल, ऑटोमोबाइल, डिफेंस मटेरियल्स, 5G, 6G, मेडिकल डिवाइसेज और भारत में अधिक से अधिक बनेंगे। भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। चमड़ा, कपड़ा, जूता निर्यात सस्ता, बैटरी, इलेक्ट्रिक गुड्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, टीवी, फ्रिज, ये सब सारे सस्ते होंगे। विदेश यात्रा, विदेश में पढ़ाई सस्ती होगी। विकास दर 7% से अधिक होगा। हर जिले में एक महिला हॉस्टल। डिफेंस कैपेक्स में 21% का इजाफा। किसानों के लिए 500 जलाशय और अमृत सरोवर का निर्माण। काजू, नारियल किसानों को प्रोत्साहन। आगामी 5 वर्षों में हर शहर को 5000 करोड़। मान्यवर, भारत एक युवा देश है जिसे माननीय मोदी जी के नेतृत्व में विश्व ने पहचाना है, इसके महत्व को समझा है। कांग्रेस ने हमारी आर्थिक स्थिति को विश्व में 11वें नंबर पर पहुंचाकर देश का सत्यानाश कर दिया था। भारत की आर्थिक स्थिति चरमराती जा रही थी, परंतु आज मोदी जी ने भारत को तीसरे स्थान पर ला खड़ा कर दिया है। आत्मविश्वास से भरा हुआ भारत साइंस, स्पेस, स्पोर्ट्स और हर क्षेत्र में डंका बजा रहा है। विश्व का झुकाव आज भारत की ओर है। सबका हम पर विश्वास है। आज हम ग्लोबल साउथ की बुलंद आवाज हैं। देश से एक साथ ट्रेड डील, यूएस के साथ डील। आज स्थिति यह है कि सभी विकसित देश हमसे डील के लिए लालायित हैं। एक कांग्रेस का समय था, कोई दूर दूर तक नजर उठा के हमारी तरफ देखने को तैयार नहीं था। कांग्रेस की ना कोई सोच थी, ना कोई विजन था। देश को गर्त में मिला दिया था कांग्रेस ने। मान्यवर, आज भारत नीतियों पर चल रहा है। रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। आज भारत का हर क्षेत्र में सबसे compete करने की स्थिति में है हमारा देश। बैंकिंग सेक्टर को कांग्रेस ने बर्बाद कर दिया था। आज एनपीए बिल्कुल समाप्त है। हमारे बैंक्स मुनाफे में हैं। पीएसयूज, एलआईसीज, एसबीआई, एचएएल सभी कांग्रेस शासन में बंदी के कगार पर थे। आज पीएसयू मुनाफे में चल रहे हैं। 2014 के बाद 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। मान्यवर, टोटल नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स 2014 में 68 से 74 था। आज भारत में 162 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स हैं। 18,000 गांवों में 2014 के बाद मोदी जी के शासन में बिजली पहुंचाई गई है। 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप बिजली, पानी, शौचालय, गैस कनेक्शन और लखपति दीदी योजना से महिलाओं का विकास सर्वविदित है। मान्यवर, विरोधियों के लाख अड़चने पैदा करने के बावजूद 2047 तक विश्व पर भारत को विजय पाना ही है। विकसित भारत बनाकर टॉप पर रहना है और यही है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का दृढ़ संकल्प, जिसे साकार करने के उद्देश्य से वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने यह बजट प्रस्तुत किया है। राष्ट्र सर्वोपरि है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बजट का पूर्ण समर्थन करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय श्रीमान लहर सिंह सिरोया जी। धन्यवाद सभापति जी। मेरा सौभाग्य का आप विराजमान हैं और मुझे समय भी 10 मिनट का मिल गया है। मैं कुछ बात अपनी कह सकूंगा। मैं शायद दोनों सदनों में जैन समाज जो सेवा और समर्पण के लिए जाना जाता है, उनका एकमात्र मैं प्रतिनिधि हूँ जिसको मुझे बजट पर बोलने का मौका मिला है। मैं व्यापारी वर्ग से भी हूँ, पारिवारिक रूप से। तो बजट के बारे में इतना कुछ कहा गया है कि अगर मुझे विस्तार से दे तो मुझे इसमें कम से कम आधा घंटे का समय मिलना चाहिए, लेकिन जो आपका समय सीमा है उसी में मैं सीमित रहूँगा। ये बजट स्टेबिलिटी, फिस्कल डिसिप्लिन और महंगाई को नियंत्रित करने का बजट है और ये दिखाता है कि हमारी जो इकोनॉमिक व्यवस्था है
देश के विश्व के किसी भी बड़े देशों के मुकाबले हम एक गंभीर आर्थिक व्यवस्था का देश बन चुके हैं। इस बात को पूरा विश्व एक्नॉलेज कर रहा है। हम गंभीर और परिपक्व देश के नाते जाने जा रहे हैं। कुछ साथियों ने कहा कि ये उबाऊ था, तो आदरणीय सभापति जी मैं बताना चाहूँगा, ये आर्थिक बातों की चर्चा करना, अकाउंटेंट से करना, किसी भी व्यापार में, दुकान में अकाउंटेंट से करना बहुत मुश्किल का काम होता है, बहुत बोरिंग काम होता है, लेकिन वो करना पड़ता है। किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था के लिए जो मनन चिंतन होता है तो वो कोई रोचक बात नहीं होती है। कुछ लोगों को फिल्म की बात करेगा तो अच्छा लगता है, किन्हीं को कुछ बात करें, कुछ इनकम टैक्स में कुछ गड़बड़ बढ़ कर दिया वो अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है। ये गंभीर बजट रहा है और उसके लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी के नेतृत्व में आदरणीय निर्मला जी ने, जो हमारे राज्य से मेरे साथ ही निर्वाचित हुई हैं, उनका बड़ी मेहनत से तैयार किया बजट है और मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं। आर्थिक विकास एवं सामाजिक समरसता ये साथ साथ चलती है। आर्थिक विकास के साथ में समाज का सामाजिक विकास भी होते रहना जरूरी है। और ये जो जिस तरह का एक सामाजिक समरसता भी देश में बन चुका वातावरण कई योजनाओं के माध्यम से, तुम्हारे कांग्रेसी मित्रों को इसमें बड़ी उनको रास नहीं आ रहा है। ये कैसे हो गया? पूरे 12 वर्षों से देश एक तरह से आर्थिक प्रगति करता चल रहा है और कोई डिस्टर्बेंसेस नहीं है। समाज में किस तरह के कोई दंगे फसाद झगड़े नहीं हैं। चाहे कोविड का मामला हो, कुछ भी संकट आया हो, जिस तरीके से हल किया गया, ये हमारे कांग्रेसी मित्रों को रास नहीं आ रहा है। और जब कोई एक विदेशी वक्ता कह देता कि ये तो डेड इकोनॉमी है, तो हमारे कांग्रेसी मित्र आदरणीय खड़गे जी पधार गए हैं, मेरा सौभाग्य है, तो वो एकदम उछलने लगते हैं। और कुछ दिनों के बाद ही जब वो विदेशी इकोनॉमिस्ट वापस अपनी बात को वापस लेता है तो कांग्रेस में निराशा छा जाती है। और जब डील कुछ अच्छी होती है तो उसमें कुछ गलतियां निकाल करके किस तरह से ये किया, तो बड़ा शर्मनाक है। लेकिन हमारे कांग्रेसी मित्रों को बुद्धि कब आएगी मुझे नहीं समझता हूँ। मैं समझता था कि हमारे आदरणीय खड़गे जी, जो मेरे राज्य से, मैं बहुत उनका सम्मान करता हूँ, बहुत कुशल प्रशासक रहे हैं, तो उनके नेतृत्व में जब अध्यक्ष हैं तो कांग्रेस में कुछ मैच्योरिटी आएगी। लेकिन मुझे लगता है कि वो चलिए, लेकिन वो ही उनके उसमें आते जा रहे हैं और अपने आप को डाइल्यूट करते जा रहे हैं। मैं उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। इसमें धनजन योजना का मैंने जैसा कि पूरे देश में सब वर्गों को, सब राज्यों को साथ में लेकर के जो विकास हो रहा है, उसका एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा अध्यक्ष जी। ये जब धनजन योजना प्रारंभ हुई थी, इसका काफ़ी मजाक उड़ाया गया था। आपको जानकर, सदन को जानकर आश्चर्य होगा और सब लोग चौंकेंगे कि 57.52 करोड़ 57.52 करोड़ धनजन खाते खुले हैं। और आज उनमें राशि कितनी है? उनमें 2,88,284 2,88,284 करोड़ राशि में जमा है आज गरीबों के खातों में। ये आपके और हमारे में जो हम ड्राइंग रूम में बैठ के राजनीति करते हैं, टी शर्ट पहन के घूम के उनको चैलेंज करते फिरते हैं। और जब मुझे बड़ा दुख होता है, मैं भी माइनॉरिटी से हूँ, जैन समाज का, जब कोई लड़का जेबों में हाथ डाल के उसको कुछ भी कहता तो मुझे बड़ा बुरा लगता है। अगर उनके साथ में जो बहादुर कम्युनिटी के साथ में ऐसा बर्ताव हो सकता है तो हमारे साथ कब क्या होगा? यानी मैं उस पर भी चर्चा नहीं करना चाहता। और एक और, क्योंकि मैं कर्नाटक से आता हूँ, तो मैं कर्नाटक की तरफ से, जनता की तरफ से भी मैं धन्यवाद करना चाहूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय वित्त मंत्री जी का। 2009 से 2014 तक रेलवे का आवंटन है
835 करोड़ का था, 5 वर्षों में 835 करोड़, और आज इस बजट में 2026-27 के बजट में कर्नाटक को रेलवे में 7,748 करोड़, 9 टाइम्स बजट दिया है। और मैं तो आदरणीय खड़गे जी से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, नहीं हम तो तैयार हैं, लेकिन मेरा यह कहना है कि आदरणीय खड़गे जी के नेतृत्व में हमारे कर्नाटक राज्य में जो पिछले 6 महीने से झगड़ा चल रहा है मुख्यमंत्री को लेकर के, और मैं Please, please, please. You address me. Address me. मैं इसलिए कह रहा हूं, नासिर हुसैन जी बैठ जाइए प्लीज कृपया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो बजट में जो योजना है कर्नाटक को लेकर के योजना है गरीबों के लिए, उन योजनाओं का अगर लाभ मिले, किसानों को लाभ मिले, मजदूरों को लाभ मिले, आयुष्मान का लाभ मिले, तो कर्नाटक सरकार का अच्छे चलते रहना जरूरी है। और कर्नाटक में प्रशासन की क्या हालत है वो नासिर हुसैन जी भी जानते हैं, खड़गे जी भी जानते हैं, आदरणीय खड़गे जी जानते हैं, और जयराम रमेश जी भी जानते हैं, क्योंकि भी मेरे साथ है। मैं बता दूंगा। Honorable member, applause. अरे मैं कर्नाटक चाहता हूँ, मुझे मालूम है क्या प्रश्न है, आप सब जानते हैं। Address the chair. दूसरा एक बताऊं, जहां तक मैं जैन समाज से हूं, मैं माइनॉरिटी की व्यवस्था मैं समझता हूं व्यवस्था। मैंने जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया था कि टीबी मुक्त भारत बनाने का, उसमें उन्होंने सभी सांसदों से रिक्वेस्ट किया था कि आप ये जो मरीज हैं निक्षय मित्र योजना के अंतर्गत उनको आप एडॉप्शन करें और 6 या 8 महीने तक उनको खाने का किट दें। तो अध्यक्ष जी, मुझे संतोष है इस बात का कि मैंने इसमें काफ़ी इस अभियान में रुचि ली, और कई हमारे मंत्रालय के साथ मिलकर के, स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ जिसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी योगदान रहा, हमने आइडेंटिफाई करके मैंने कई लोगों को एडॉप्शन किया, मरीजों को। और मैं आप सबको राज्यसभा सदस्यों को जानकर संतोष होगा कि मैं सबसे ज़्यादा लेने वाला सांसद हूँ, जिसमें सबसे ज़्यादा मैंने अडॉप्ट किए हैं, ये रिकॉर्ड में है। तो अध्यक्ष जी, जब मैंने हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री से मिला और मैंने जब उनको कहा कि मैंने टीबी नक्शा मित्र के अंतर्गत मैंने कई रोगी अडॉप्ट किए हैं राशन देने के लिए, तो उन्होंने पूछा कि क्या सब समुदाय के लोगों को लिया है? तो संजोग से मैंने उन इलाकों में गया था जहां सब समुदाय के लोग थे, तो मैंने जब उनको लिस्ट दी तो उन्होंने कहा कि नहीं, बहुत अच्छा काम किया है। तो उनका ये मूल मंत्र है कि सबका साथ सबका विकास मूल मंत्र, जिसका साक्षी मैं हूं। और मैं खड़गे जी को, आदरणीय खड़गे जी को बताना चाहूंगा कि मैंने जब निक्षय मित्र के प्रोग्राम में जो प्रोग्राम किए थे उन जगहों में किए जिनके कांग्रेस के एमएलए हैं, आदरणीय खड़गे जी के एमएलए हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, और उसमें सब समुदाय के लोग ज्यादा हैं। मैंने इसमें कोई भेदभाव नहीं किया। प्लीज कंक्लूड करिए प्लीज। और मैं निक्षय मित्र के, हाँ मैं बोलूं, अब तो अब मेरा समय समाप्त हो रहा है, इसलिए मैं आदरणीय खड़गे जी से निवेदन करना चाहूंगा कि ये हमारे जो केंद्र सरकार की योजना है, उन योजनाओं को सबके लिए उन योजनाओं को प्रचारित करें और उन योजनाओं को एजुकेट करें, क्योंकि कई योजना आने वाली है। और 1-2 बातें और कहकर मैं समाप्त करूंगा, क्योंकि आपने मुझे निमांस का भी डायरेक्टर बना के बोर्ड में भेजा है और कॉफी बोर्ड के बोर्ड में भेजा है। तो निमांस के लिए मैं विशेष तौर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय निर्मला सीतारमण जी को मैं बधाई और धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि निमांस का उसमें मैं गया हूं, बेंगलोर में हमारा हेडक्वार्टर था, तो मुझे इनका मालूम है कि इनकी और होना चाहिए, जो नॉर्थ ईस्ट में जो निमांस खुल रहा है। और मैं भी इस पुरजोर से आपको विश्वास दिलाता हूँ, मेरे से भी जो होगा मैं उस निमांस के लिए करूंगा, और निमांस का और जगह में जाए और उत्तर प्रगति इस जिम्मेदारी को निभाऊंगा। और पुनः इस बात का धन्यवाद करते हुए कि ये जो इतना बढ़िया बजट है, इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, निर्मला सीतारमण जी को और पंकज जी चौधरी को और सभी अधिकारियों को भी बधाई देता हूं कि इतना बढ़िया बजट लाए हैं। और मैं आदरणीय खड़गे जी से मेरा निवेदन है कि इस प्रकार कर्नाटक में इन योजनाओं का लाभ मिले, उसके लिए कुछ प्रयास करें। आप मुख्यमंत्री बने, मुझे कोई एतराज नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। Announcement regarding recommendations of the BAC. Honorable members, I have to inform members that the Business Advisory Committee in its meeting held today, the 12th February 2026,
selected the following two ministries for discussion on their working during the second part of the current session. 1. Rural Development. 2. Environment, Forest and Climate Change. The committee further decided that 3 more ministries to be taken up for discussion will be finalized in due course. Message from Lok Sabha, Secretary General. Sir, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha at its sitting held on the 12th of February 2026 has adopted the following motion, that this House do extend time for the presentation of the report of the Joint Committee on the Viksit Bharat Shiksha Adhishtan Bill 2025 up to the first day of last week of monsoon session 2026. Thank you. Mallikarjun Kharge, you wanted to say something? You wanted to say something? It's fine. It's fine? Okay. Honorable Shriman. वह लहरी आदमी है और माइग्रेंट है, अब उसको बोलना ठीक नहीं होगा क्योंकि आकाश को थूके तो हमारे ऊपर ही गिरता है. Thank you. Honorable Shriman Mithilesh Kumar ji. Honorable Shriman Mithilesh Kumar ji. Please. हो गया. पूरा देश एक है. One second. Mithilesh ji, 1 second. 1 second. Please. Okay, 1 minute. माननीय सिरोया जी, 30 seconds. सर, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं राजस्थान में जन्मा हूं और मैं कर्नाटक में गया हूं. कर्नाटक की जनता ने मुझे प्यार दिया, स्नेह दिया है. कोई भाषा का भेदभाव कर्नाटक में नहीं है और कर्नाटक के लोग सब जगह हैं और सब जगह लोग कर्नाटक में. आज पूरा देश एक में हो चुका है, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, कर्नाटक हो, कोई भी देश हो. तो ये बात कहना शोभा नहीं देता है. और हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष ये कांग्रेस की सोच दिखाता है कि कांग्रेस किस तरह की सोचती है. ये अलगाव और क्षेत्रवाद फैला करके जहर फैलाना चाहती है. मैं निंदा करता हूं इस बात. थैंक यू. माननीय श्री मिथिलेश कुमार जी. आदरणीय उपसभापति महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री श्रीमती We will examine it. I'm giving the room. Yeah, fine. Please, Mithilesh ji. माननीय उपसभापति महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को लगातार 9वीं बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने के लिए हार्दिक बधाई देता हूं. ये केवल एक संसदीय परंपरा नहीं है बल्कि उनके सुदृढ़ नेतृत्व, आर्थिक दूरदृष्टि और राष्ट्र के प्रति समर्पण, अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है. माननीय उपसभापति महोदय, आज मुझे राज्यसभा में वर्ष 2026-2027 के केंद्रीय बजट पर अपने विचार रखने का अवसर देने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं. माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत ये बजट आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक और सशक्त, दूरदर्शी और ऐतिहासिक कदम है. महोदय, ये बजट केवल माइक्रोफोन प्लीज. माइक्रोफोन. यस प्लीज. महोदय, ये बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं है बल्कि ये 140 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं, युवाओं के सपने, किसानों के परिश्रम, माताओं और बहनों के सशक्तिकरण और मध्यम वर्ग के विश्वास का प्रतिबिंब है. ये बजट समावेशी विकास, आर्थिक स्थिरता, सामाजिक न्याय और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को नई दिशा, नई गति प्रदान करता है. वर्तमान बजट 2026-27 के हर क्षेत्र के लिए रिकॉर्ड बजट आवंटित किया गया है. यह बजट राष्ट्रीय कल्याण के लिए है. NDA सरकार के नेतृत्व में भारतीय अर्थव्यवस्था नई ऊंचाइयों को छुआ है और 5वें स्थान पर पहुंच गई. अगले 3 वर्षों में भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा. रक्षा बजट के क्षेत्र में आपको बताना चाहता हूं, 2013 और 14 में मात्र 2 लाख करोड़ का बजट हुआ करता था, जिसको हमारी माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा बढ़ा करके 6,81,000 करोड़ रुपया हो गया है. और रेलवे बजट 27,000 करोड़ से बढ़ाकर 2,55,000 करोड़ रुपए का हो गया है. पिछली सरकारें जो होती थी उनमें घोटाले, भ्रष्टाचार, तमाम तरीके के ऐसे अपने काम किए जाते हैं जिससे सरकार के पैसे का दुरुपयोग होता था. लेकिन अब सरकार
विकसित भारत के विजन को साकार करने की ओर अग्रसर है और उसी के लिए काम कर रही है। केंद्रीय बजट 2026-27 आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प करने वाला एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी बजट है। ये बजट केवल आय व्यय का लेखा जोखा नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं, आशाओं और आत्मनिर्भरता के विश्वास का सशक्त दस्तावेज है। पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार ने नीति की स्पष्टता, राजनीतिक स्थिरता और निर्णायक नेतृत्व के माध्यम से भारत की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती प्रदान की है। आज भारत कम महंगाई, उच्च विकास दर और वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भी एक विश्वसनीय आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है। इस बजट में एक्शन ओवर एम्बिग्यूटी और रिफॉर्म ओवर रेटोरिक की भावना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। महोदय, ये बजट सृजन और उत्पादकता वृद्धि पर विशेष रूप से केंद्रित है। बायोफार्मा शक्ति योजना, सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, इलेक्ट्रॉनिक्स और केमिकल पार्क जैसी पहले भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। टेक्सटाइल क्षेत्र के लिए प्रस्तावित समेकित कार्यक्रम में लाखों श्रमिकों, बुनकरों और मजदूरों का कल्याण, कारीगरों को नई ऊर्जा और नए अवसर प्राप्त होंगे। महोदय, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि 12.2 लाख करोड़ के रिकॉर्ड सार्वजनिक पूंजीगत व्यय 4.4% प्रभावी कैंपेक्स से देश के बुनियादी ढांचे को नई गति मिली है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, राष्ट्रीय रोजगार और हाई स्पीड रेल के माध्यम से शहरी सामूहिक आर्थिक शक्ति प्रदान करने के लिए शहरी क्षेत्रों की क्षमता बढ़ाने के लिए टायर सेकेंड और टायर थर्ड शहरों तथा तीर्थ नगरों पर फोकस किया गया है। वृद्धि संयोजक योजना के अंतर्गत हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा रेल कॉरिडोर मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलोर, हैदराबाद चेन्नई और चेन्नई से बेंगलोर और दिल्ली वाराणसी, वाराणसी सिलीगुड़ी पर्यावरण अनुकूल यात्री को प्रणाली प्रदान करने के लिए रेल कॉरिडोर की जो स्थापना की गई है, जिससे कई नई परियोजनाएं न केवल लॉजिस्टिक रूप से लागत कम करेंगी बल्कि आर्थिक गतियों को भी तीव्र गति प्रदान करेंगी। ये बजट विशेष रूप से MSME के क्षेत्र में सशक्त बनाने को एक केंद्रित है कि चैंपियन MSME के निर्माण हेतु 10,000 करोड़ के रुपए से SME ग्रोथ फंड तथा पेशेवर तरलता समर्थन उपायों की घोषणा, छोटे उपयोगों और स्टार्टअप्स के लिए बड़े अवसर प्रदान किए जाते हैं, क्योंकि हमारे देश के विकसित भारत का रास्ता छोटे उद्यमियों के बीच से निकलता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच देश को विकसित बनाने के लिए उसमें छोटे उद्यमियों को बढ़ावा देने का इस बजट में जो प्रावधान किया गया है, उसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये बजट युवा शक्ति और नारी शक्ति को सशक्त करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण है। शिक्षा से रोजगार तक की सुरक्षित सुदृढ़ कड़ी यूनिवर्सिटी टाउनशिप की आवश्यकता स्थापना, प्रत्येक जिला में प्रत्येक जिले में छात्रावास का जो निर्माण किया जा रहा है, ये नारी शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री ने लिया है उसको दर्शाता है। विरोधियों के समझ में नहीं आता है, उन्होंने कभी भी महिलाओं के लिए इस तरीके से कोई भी स्थान नहीं दिया। 1 लाख से अधिक एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल केयर गिवर्स का प्रशिक्षण, ये सभी पहले मानव संसाधन को सशक्त बनाएंगी। खेलो इंडिया मिशन के माध्यम से भारत को खेल महाशक्ति बनाने की ठोस आधारशिला रखी गई है। इस बजट में 5 आयुर्वेदिक एम्स खोलने का जो प्रस्ताव किया गया है, वो निश्चित रूप से देश के हमारे गरीबों, नौजवानों, बुजुर्गों के लिए और जो खासकर सिद्धि ये दवाइयाँ ऐसी हैं जो बीमारियों को जड़ से खत्म करती हैं। इन पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को आधुनिक डायग्नोस्टिक सुविधाओं और पुनर्वास योजना से जोड़ा जाएगा। किसानों और ग्रामीण विकास के लिए मत्स्य पालन, पशुपालन उच्च मूल्य के माध्यम से, जो पशुपालन एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये घोषणा की है, उसका सीधा अभी उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक फैसला किया गया है कि हर जिले में हम
एक वेटरनरी अस्पताल खोलेंगे जिससे जानवरों की देखभाल होगी, और जो गर्भावस्था गाय होगी तो उसमें 90% फीमेल बच्चियां पैदा होगी, क्योंकि आप देखते होंगे कि गाय का दूध और गाय का घी अमृत के समान होता, ताकतवर बनाता है और रोगों से लड़ने की क्षमता को प्रदान करता है। ऐसी व्यवस्था पशुपालन विभाग को मजबूत करने के लिए जो बजट में रखा गया, मैं केंद्रीय मंत्री वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को इसलिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। भारत विचार और कृषि कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्लेटफॉर्म किसानों को आधुनिक वैज्ञानिक और व्यक्तिगत सलाह उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि हम भी किसान के बेटे हैं, किसानी करते हैं। तो जब किसान को कोई फसल में कोई रोग लगता है तो उसको जब तक खेत पे जाता है तब तक फसल चौपट हो जाती है, तो AI के माध्यम से उसको तुरंत मिल जाएगा, लाके दवाई डाल देगा, जिससे खेत और फसल मजबूत हो जाएगी। उपसभापति महोदय, ये गर्व का विषय है कि 2009 से 14 के दौरान जहां उत्तर प्रदेश के लिए रेलवे का औसत बजट मात्र 1109 करोड़ रुपए था, वहीं 2026-27 में बजट बढ़ा करके 20,012 करोड़ रुपए का हो गया है, जो लगभग 18 गुना की ऐतिहासिक वृद्धि है। माननीय वित्त मंत्री जी को, निर्मला सीतारमण जी को, माननीय वित्त मंत्री पंकज चौधरी जी को बधाई देता हूं कि वित्त मंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, तो उत्तर प्रदेश को इतना अधिक बजट दे करके इसको आगे बढ़ाया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में रेलवे का विकास का इंजन का बनाने का कार्य प्रतिबद्धता से किया जाता है। मैं उत्तर प्रदेश के माध्यम से माननीय मंत्री से चाहूँगा कि आप अपने बजट में उत्तर प्रदेश में रेलवे के विकास के लिए जो धन जारी किया गया है उसमें बहुप्रतीक्षित एक परियोजना है जो हमारे शाहजहांपुर की है, मैलानी से खुटार पुआया शाहजहांपुर जलालाबाद होते हुए फर्रुखाबाद तक 105 किलोमीटर की एक रेल लाइन परियोजना को सम्मिलित कर ले, ताकि क्योंकि उनकी योजना है कि शहरों को और तीर्थ स्थल को जोड़ने की, तो मैलानी से तक पूर्णागिरि से आकर के ट्रेन आती है और मैलानी से पूरा रेल फर्रुखाबाद जाएगी, जहां गंगा भी स्नान करके लोग लौटे। बस 1 मिनट का समय और चाहता हूं, कंक्लूड करें। और माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछली सरकारों में ग्रामीण विकास के नाम पर मनरेगा की एक योजना चलाई गई थी, जिसके अंतर्गत केवल गड्ढा पाटना और गड्ढा खोदना ही काम था और बाकी कोई काम नहीं किया गया था। लेकिन इस सरकार में बीजी राम जी के माध्यम से गांव का विकास होगा। 100 दिन की जगह पे 125 दिन गांव को काम मिलेगा। जब कटाई और बुवाई का समय होता था तो मजदूरों को बहुत दिक्कत होती, हम लोग इस बात को जानते, तो उस समय मजदूर भी मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात है, हर गांव का जो सपना माननीय प्रधानमंत्री ने देखा है कि विकसित गांव हो, तो गांव में पक्की सड़क बनेगी, पक्की नाली बनेगी, पक्के शमशान घाट बनेंगे, पक्के आपके पंचायत घर बन जाएंगे और पक्के दुकानें बन जाएंगी, जिससे युवाओं को और महिलाओं को वहां उसी गांव में रोजगार मिल जाएगा। रोजगार के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मैं ऐसे बजट का पुरजोर समर्थन करता हूं और विरोधियों से भी कहता हूं कि वो भी समर्थन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ऑनरेबल श्रीमती रमीला बेन बेचारबाई बारा जी। धन्यवाद माननीय उपसभापति जी। मैं आज इस गरिमामय सदन में केंद्रीय बजट 2026-7 पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए खड़ी हूं। सर्वप्रथम मैं देश के प्रधानमंत्री जी के साथ हमारे महिलाओं के गौरव माननीय वित्त मंत्री जी को इस संतुलित, समावेशी और दूरदर्शी बजट के लिए बधाई देती हूं। ये बजट माइक्रोफोन प्लीज। माइक्रोफोन, या थैंक यू। चालू हो गया। ये बजट आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत 2047 और समान अवसरों वाले भारत की दिशा में एक मजबूत सशक्त कदम है। माननीय उपसभापति जी, ये बजट केवल आंकड़ाओं का दस्तावेज नहीं है, लेकिन हमारे देश के 140 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं, परिश्रम
और भविष्य का आशाओं का प्रतिबिंब है। माननीय उपसभापति जी, मैं जरूर कहूंगी ये बजट एक और जहां आर्थिक विकास को गति देता है, वहीं दूसरी ओर राजकोषीय अनुशासन बनाए रखता है। बुनियादी ढांचे में निवेश, पूंजीगत व्यय में निरंतरता और निजी निवेशों को प्रोत्साहन, ये सभी संकेत देते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था स्थिर, मजबूत और आत्मविश्वासी दिशा में आगे बढ़ रही है। माननीय उपसभापति जी, इस बजट की सबसे बड़ी विशेषता गरीब, किसान, श्रमिक और वंचित वर्गों पर फोकस दिया गया है। इस बिल में कृषि और किसान दोनों पे बहुत बल दिया गया है। कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक, सिंचाई, भंडारण और मूल्य संवर्धन पर बल दिया गया है, जिससे केवल किसान उत्पादक नहीं बल्कि उद्यमी बन सके। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के लिए रोजगार, सड़क, बिजली, डिजिटल कनेक्टिविटी पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। माननीय उपसभापति जी, इस बजट में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और इसके लिए महिला स्वयं सहायता समूहों और स्टार्टअप के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान भी किया गया है। माननीय उपसभापति जी, हमारा भारत देश युवा देश है और यह बजट युवाओं के भविष्य को केंद्र में रखता है। शिक्षा व्यवस्था में तकनीक आधार सुधार, कौशल विकास और रोजगार लक्षी प्रशिक्षण और नवाचार एवं स्टार्टअप संस्कृतियों को बढ़ावा दिया गया है। माननीय उपसभापति जी, इस बजट में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, प्राथमिक स्वास्थ्य के ढांचे के सुदृढ़ीकरण और डिजिटल हेल्थ सुविधाओं पर भी बल दिया गया है, वो बहुत सराहनीय बात है। साथों साथ इस बजट में वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा उपाय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी की संवेदनशील और मानवीय सोच को दर्शाते हैं। कहीं हमारे विपक्ष मित्र बोल रहे थे कि सीनियर सिटीजन के लिए कुछ प्रोविजन नहीं है। मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि सीनियर सिटीजन को के लिए वही वंदना जो योजना है ये बहुत सराहनीय है। माननीय उपसभापति जी, विशेष रूप से मैं इस बात की सराहना करती हूँ कि इस बजट में जनजातियां, जिस समाज से मैं आती हूँ, इन क्षेत्रों जो आज तक विकसित नहीं हुए, वो जनजातीय क्षेत्रों, सीमावर्ती इलाकों और पिछड़ों जिलों के समग्र विकास पर इस बजट में फोकस दिया गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क और रोजगार माध्यम से इन क्षेत्रों को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास ही सच्चे समावेशी विकास का उदाहरण है। यह बजट हरित ऊर्जा, स्वच्छ पर्यावरण और जल संरक्षण की दिशा में भी ठोस कदम उठाता है। इससे फलित हो रहा है कि मोदी जी सरकार भारत विकास और पर्यावरण दोनों को बीच संतुलन बनाकर आगे बढ़ रही है। माननीय सभापति जी, अंत में मैं ये कहना चाहूंगी, ये बजट एक ऐसा दस्तावेज है जो विश्वास, विकास और भविष्य तीनों के साथ लेकर चलता है। इस बजट को मैं समर्थन करती हूँ और ये विनती करती हूँ सबको कि ये बजट भारत की आर्थिक रूप से मजबूत, सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण और वैश्विक रूप से नेतृत्वकारी राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका बनाएंगे। इसलिए मैं समर्थन करती हूँ। धन्यवाद। शुक्रिया। ऑनरेबल श्रीमान रामदास अठावले जी।
माननीय रामदास अठावले जी। सर, ये बजट का समर्थन करने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से सपोर्ट करने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। अच्छा बजट देने की जिनके पास है कला, अच्छा बजट देने की जिनके पास है कला, उनका नाम है सीताराम निर्मला। नरेंद्र मोदी जी तो कर रहे गरीबों का भला, नरेंद्र मोदी जी तो कर रहे गरीबों का भला, तो कांग्रेस वालों का क्यों दिल जला। 2026-27 का एनडीए सरकार का ये खाली नहीं है बजट, ये है नरेंद्र मोदी जी का मजबूत वेट। अब अमेरिका में भी मोदी जी का बढ़ गया है रेट, तो क्यों नहीं होगा भारत देश स्ट्रांग बेट। जो अर्थ मंत्री नहीं है कॉमन, जो अर्थ मंत्री नहीं है कॉमन, उनका नाम है निर्मला सीतारामन। भारत यूएस का इतना अच्छा हो गया है डील, तो खरगे साहब आपको क्यों हो रहा है फील। नरेंद्र मोदी जी ने विकास में पार किया है लाखों मील, क्योंकि उनका बहुत ही बड़ा है दिल। यूएस के साथ डील, यूरोप के साथ व्हील और रशिया के साथ दिल, मतलब भारत देश को मजबूत बनाने के लिए। तिवारी साहब, ये डील हमने किया है, आपके कार्यकाल में भी डील होता था, तब हमको फील नहीं होता था, लेकिन जब हम डील करते हैं, क्योंकि मेरा नाम लिया नहीं ठीक है सर। अब हमारे चेयरमैन सर, आपकी और अपनी दोस्ती बहुत अच्छी है, इनके साथ मेरी दोस्ती थी, लेकिन मैंने छोड़ दी दोस्ती। तो ये जो बजट है, बजट बहुत ही शक्तिशाली बजट है। ये बजट जिस तरह इंदिरा गांधी जी ने दिया था गरीबी हटाओ का नारा, लेकिन गरीबी हटाने के लिए पैदा हुआ नरेंद्र मोदी जैसा तारा। इतनी सुंदर बन गई ये सड़कें, इतनी सुंदर बन गई सड़कें, खरगे साहब इस पर कांग्रेस वाले क्यों भड़के। गांव-गांव में विकास के तिरंगे फड़के, गांव-गांव में रमेश जी तिरंगे फड़के, तो क्यों तुम भड़के। तो सर, ये जो बजट है, इस बजट में गरीब है, युवा है, किसान है। किसानों को मदद करना इतना आसान नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने किसानों को मदद की है, गरीबों को मदद की है, दलितों को मदद की है, ओबीसी को मदद की है, आदिवासियों को मदद की है, और कांग्रेस वालों को भी मदद करना चाहते हैं, लेकिन वो सुन नहीं रहे हैं। ये बजट आपके लिए भी है, ये सड़कें हमारे लिए नहीं है। हमारी गाड़ी उस पर नहीं चलने वाली है, आपकी भी गाड़ी चलने वाली है। तो इस कार्यकाल में इतना अच्छा विकास हो रहा है कि निर्मला सीतारामन जी को 9वीं बार बजट देने का मौका मिला। 29 तक तो आप बजट देती रहेगी, लेकिन उसके बाद भी 34 तक भी आपको बजट देना है। क्योंकि बजट देने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। महिला को अर्थ मंत्री बनाने का एक बहुत बड़ा काम किया है। एक महिला, एक मजबूत महिला, स्टडीड महिला, हाँ?
मैंने आप हमारे साथ आइए तो मतलब हाँ ठीक है ना, वो हमारी निर्मला जी तो बहुत एक्टिव है ही है, तुम चिंता मत करो, हम उनकी चिंता करेंगे। तो कम्युनिस्ट पार्टी हमारी तो दोस्ती है, अपनी तो दोस्ती थी। तो मुझे लगता है कि सभापति महोदय, इस बजट पर नेगेटिव थिंकिंग नहीं होना चाहिए। अभी मेरा मंत्रालय जो सामाजिक न्याय मंत्रालय है, इन लोगों ने सामाजिक न्याय नहीं दिया, इसीलिए दलित लोग पिछड़े रहे। आज मेरे मंत्रालय का बजट 1,98,000 करोड़ का है। 1,98,000 करोड़ का बजट मतलब 2 लाख करोड़ का बजट, इतना बड़ा बजट है। गरीबों की गरीबी हटाने का प्रयत्न तब भी हुआ, लेकिन गरीबी हटी नहीं, गरीबों को हटाने का प्रयत्न हुआ। 25 करोड़ लोग 10 सालों में रिकॉर्ड में है, ये हमारे आंकड़े नहीं है। 25 करोड़ लोग गरीबी के ऊपर आए हैं। तो गरीबों को न्याय देने के लिए मोदी साहब है, प्लीज कंक्लूड। गरीबों को न्याय देने के लिए निर्मला जी है, गरीबों को न्याय देने के लिए हमारे नड्डा साहब है, और हमारे किरण रिजिजू आदिवासी बुद्धिस्ट आदमी हिमाचल प्रदेश से आते हैं। नरेंद्र मोदी जी, मैंने अरुणाचल और हिमाचल में थोड़ी गड़बड़ होती है। मैंने मतलब जेपी नड्डा साहब हिमाचल से है, आप अरुणाचल से, मैं महाराष्ट्र से हूँ, रमेश जी आप भी है। तो मतलब नरेंद्र मोदी जी ने किरण जी को लॉ मिनिस्टर बनाया था, अभी उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। रामदास जी प्लीज कंक्लूड। अभी मतलब वो माइनॉरिटी के भी मिनिस्टर है। हमारे अर्जुन मेघवाल साहब को भी लॉ मिनिस्टर बनाया है। बाबा साहब अम्बेडकर जी लॉ मिनिस्टर थे, उसके बाद दलित समाज और हमारे बुद्धिस्ट समाज के आदमी को ये मतलब डिपार्टमेंट मिला था। और मुझे सामाजिक न्याय डिपार्टमेंट हमेशा मिलता है। मतलब सामाजिक न्याय, मैं 9-9.5 साल से मैं सामाजिक न्याय मंत्री हूँ, क्योंकि मोदी जी को मालूम है कि सामाजिक न्याय कौन दे सकता है, तो राठौर ही दे सकते हैं। हाँ, तो इसीलिए मतलब हमारे ठाकुर साहब तो है ही ना, हमारे ठाकुर साहब है, सभी जाति धर्म के लोग हमारे साथ है, सभी लोगों को न्याय देने के लिए बजट है। और इसीलिए अध्यक्ष महोदय, इस बजट का समर्थन सबने करना चाहिए। रमेश जी आपने भी करना चाहिए, खरगे साहब ने करना चाहिए। और खरगे साहब हमारे समाज के हैं, उन्होंने बौद्ध धम्म का एक गुलबर्गा में बहुत अच्छा मेमोरियल बनाया है। और हम सब लोग जो है, सब लोग बजट का समर्थन करने के लिए खड़े हैं। और आप लोगों की तरफ से भी हमारी अपेक्षा है, रोज हंगामा मत करो, हम भी हंगामा करते थे, लेकिन आप ज्यादा हंगामा कर रहे हैं। प्लीज कंक्लूड जी। समर्थन करता हूं, और ये बजट देश का विकास होगा, देश का विकास होगा। और नरेंद्र मोदी साहब का जो नाम है, ये नाम पूरे देश भर में गूंजता रहेगा, ये मैं अपेक्षा करता हूं। और बाबा साहब के संविधान का भारत का खड़ा करने के लिए ये बजट है, सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय देने वाला बजट है, इसीलिए मैं इस बजट का समर्थन करता हूं। और आज मेरा बहुत ही खुश है मन, इसीलिए मैं करता हूं बजट का समर्थन। मैसेज फ्रॉम लोक सभा सेक्रेटरी जनरल। Sir, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha at its sitting held on the 12th February 2026 passed the Industrial Relations Code Amendment Bill 2026. I lay a copy of the said bill on the table. Honorable Minister of Finance, Srimati Nirmala Sitharaman ji, to reply to the discussion. Thank you very much, sir. Sir, this budget is being presented at a moment when there is a very rare balance for India
and this kind of a moment doesn't come too many times in history. A rare moment when our macroeconomic balance, which is unique to achieve, I'm saying it more with responsibility rather than claiming it as a marker with which I want to start commenting on the observations of the honorable members. It is an achievement of the entire country. It is the achievement of our people to have a wonderful balance. That is, you're having a good high rate of growth of the GDP, and there is a low inflation which is being held at that kind of a level for continuously some time. I'll get into the details. This kind of a unique balance, high growth and low inflation, and that is why, not an observation made by the ministry, but I think the Reserve Bank of India had used the expression Goldilocks moment. It is not something which the ordinary citizen of India is going to relate to as a terminology. But it is a rare moment, is something which all of us can recognize, and it is not by fluke or some rare coincidence that we've arrived here. Tremendous effort, granular details in planning, and timely action that we can continuously do as a government has been undertaken, and I will elaborate it as I go down when I'm talking further on this topic. So that kind of an ideal condition for sustained growth, inclusive development, and maintaining a balance of our inflation. At one point in time, there are people who commented to me saying, should the inflation be a bit higher than what it is? Because for good growth, you need that, and that's where this whole debate about real growth versus actual growth and so on. So it is a rare moment for us, and it gives us, therefore, the confidence for planning for the next decade, 2 decades, let us say, till we reach Viksit Bharat 2047. And therefore, this budget, whilst recognizing the external challenges and the kind of situations of uncertainty which prevails all over, still has had the advantage to be able to give that kind of a lead to the common public that this has the direction, the challenges prevail, but our destination is Viksit Bharat. Therefore, how to keep that growth at a level which is sustainable and at that highest level that we've reached. So that is the backdrop with which this budget has been prepared. Sir, the National Statistical Office gave the first advanced estimate. The real GDP growth there in that advanced estimate is projected at 7.4% for the year 25-26, with a nominal growth rate at around 8%, while CPI inflation has softened to nearly 2%. So this is that combination that I'm talking about of a strong growth. Price stability is really uncommon globally and reflects the strength of India's economic fundamentals. And this, I would place again, at the cost of repeating, is an achievement of the people of India. And there is no way anyone can decry saying, oh no, but this economy is probably dead, this economy is not really doing well. These kind of naysayers are only mocking at the people of India who are really doing their bit to contribute to India's growth. So the union budget, therefore, sir, in presenting 2026-27 budget, is designed to lock in these gains, convert these macroeconomic stability factors into long-term productive capacities, and to extend this growth trajectory into the coming decade as well. So in this,
Atmanirbharta is an important element, and that principle of Atmanirbharta will be kept in mind in everything that we plan for the economy. We have built domestic manufacturing capacity, and that is very obvious. And energy security is also something which we've kept in our minds while preparing the budget. So we have also ensured that citizens also become Atmanirbhar in their own spheres of life. So ease of living, when we say that we have taken measures for ease of living, when we support employment generation, when we improve agricultural productivity, and when we increase the household's purchasing power, these are all conscious steps taken by us, resulting in these aspects of our life, and therefore all services will have to now be available for all citizens so that they are able to chalk their own course. So therefore in this budget you also see, sir, that to develop our human capital, we have set a target of creating 1 lakh allied health professionals over the next 5 years. And that scheme is supported by a total allocation of 1,000 crores for this year only, for these next 12 months. This will create employment opportunities in the health sector and also simultaneously improve the health services and promote medical tourism in this country, which is already being serviced by many hospitals, many cities. But now we want that to be very well established with good quality and standard at all levels. Sir, we are also establishing, and this is something which has been a part of one of the budget documents, the budget speech had an appendix, even there the details are given for all to see. We are establishing a high-powered education to employment and enterprise standing committee that will ensure our youth are ready for services sector, where we aim to capture nearly 10% of the global market by 2047. So this standing committee, I would want to take 1 minute to elaborate on what exactly is this standing committee going to be doing. The standing committee will prioritize on IT, fintech, logistics, healthcare, tourism, and also creative services. So when they prioritize on these sectors, because we are saying we will capture the global services sector to a level of about 10% by 2047, these are the probable sectors where a lot of service sector related entrepreneurship can develop, and for which the standing committee will prioritize on these sectors. They will look at closing the skill, infrastructure, and credit gaps. The standing committee will also suggest reforms for standards, for accreditation, and for digital regulation. It will help expand AI, cloud, and professional exports. These are areas in which we want exports to increase. Our people are capable of doing these things, remaining in India, and that kind of a global servicing will actually give them the export earnings because they will be exporting services. It will look at embedding AI curricula in teaching and methodologies and in teaching curricula, and teacher training as well, and reskilling our engineers. So this committee, sir, will also look at ways in which formalize informal work. So informal work to be formalized, what are the ways in which they can do via digital credentials. So all your skilling, getting ready with people who are ready to become entrepreneurs would all now have a great value addition in their curricula with AI and digital learning as well. So if the budget is looking at services sector, we are also emphasizing on manufacturing sector. We will scale up manufacturing in 10 key areas. So manufacturing being given priority will be shown in the way in which these 10 sectors find a place in the budget and also have a clean plan for this year, for the next 5 years, and leading up to 2047. So what are those sectors? Biopharma,
launch of Biopharma Shakti with an outlay of 10,000 crores to make India a hub of biological medicines and biosimilars. Second, semiconductors. Launch of India Semiconductor Mission 2.0, the second edition, to produce equipment, materials, and design Indian IP. The Electronics Components Manufacturing Scheme has an outlay, and it has been increased to 40,000 crores. So that's the second, sir. The third, rare earths. Establishment of rare earth corridors in mineral-rich states like Odisha, Kerala, Andhra Pradesh, and Tamil Nadu for mining, processing, and manufacturing critical minerals. That's the third, sir. The fourth, a new scheme to set up 3 dedicated chemical parks to enhance domestic production and reduce imports. Fifth, capital goods. Setting up of high-tech tool room in CPSEs and a new scheme for enhancement of construction and infrastructure equipment to manufacture high-value equipments like tunnel borers, and I expanded during my speech that it need not just be on heavy machines which are used for laying roads or laying the metro, but also for today's urbanization, multi-storied apartments. Many of the operations are today becoming mechanized, street maintenance. For all of them, you need machines which have to be heavy-duty machines which have to be produced and made in India. But in the meanwhile, we've also allowed a certain level of imports for some of the components and machinery and for them to set their manufacturing here. Sixth, sir, container manufacturing. A dedicated scheme with an allocation of 10,000 crore to create a globally competitive container manufacturing ecosystem within India. Seventh, mentioned in the budget but not much spoken outside, sports goods. A dedicated initiative to promote the manufacturing of affordable sports goods. India is likely to host the Commonwealth Games. We are also going to be pitching for the Olympics. So Indian sportsmen need affordable but international class sports goods. So we will be promoting the manufacturing of such high quality sports equipments within India. Legacy clusters. So when we are talking about manufacturing in India and there are units which are being established, large production of frontier technology matters are also being considered, but does it mean that we'll forget the existing clusters where MSME had flourished over the decades? No. So we have said 200 legacy industrial clusters will now get rejuvenated. Their cost competitiveness will improve and also will help them to obtain technologies that they'll need. So legacy clusters will be made a lot more modern with AI and digital technology being made available to them. Ninth, textiles. An integrated program featuring Samarth 2.0 for skilling and also a textile expansion and employment scheme for modernization and setting up of mega textile parks is also part of this budget. So for MSMEs, we are creating champion MSMEs, meaning at least the medium-sized ones which have potential to grow bigger. We want to support them whilst equally supporting small, medium, nano enterprises, those who have the potential to grow. Last year, you would recall, sir, that we had expanded the limit for the definition of MSME itself by increasing the turnover limit so that a medium-sized industry doesn't have to fear that he might lose all the benefits that he gets by being an MSME if only he had the opportunity to grow by growing. So for such medium-sized industries, we want to help them to come out of it, but at the same time, without losing earlier comforts or the support system which existed for them. So for that, building champion MSMEs, the budget introduces 10,000 crore
in the name of SME Growth Fund, Small Medium Enterprises Growth Fund, and mandates the TREADS platform for CPSEs to solve liquidity issues, because TREADS platform has given them how to ways in which they can monetize the bills that they've obtained, not really waiting for the final. But here, we have emphasized now through this budget that all CPSEs will have to become part of the TREADS platform, so that every bill gets paid in due time, or else the monetizing of it will happen. And that will set a precedent for private sector large firms also, which delay payments for the MSMEs, but getting onto the TREADS platform, it's all transparent and very clear for everybody to see that timely payments of their dues for the MSMEs itself will be a very big relief. And in the budget, we've made it mandatory now for CPSEs to get onto TREADS platform. So we're also providing professional support for these MSMEs through corporate mitras, with the Institute of Chartered Accountants of India, the Cost Accountants of India, company secretaries. We are creating corporate mitras who will go through a process of learning, who in turn can help MSMEs to help with such issues which need professional assistance. So additionally, of course, customs duty exemptions have been provided for critical minerals like lithium and cobalt, and capital goods for manufacturing of lithium-ion cells, nuclear energy, aeroplanes, and so on. We'll also be developing an integrated East Coast industrial corridor so that the eastern region will benefit by getting greater connectivity with the rest of the country. And a node will be set up, we said, in Durgapur. So these steps actually mentioned in the budget is a proof that our resolve to build a resilient and self-reliant India, not just by talking, but by putting money and planning for the next several years. So in this, I wish to emphasize that this is the Council of States. I urge all parties and honorable members to encourage their respective state governments to participate actively in these schemes which are announced, many of which will operate in a challenge mode. So the sooner they come with an exhaustive planning, looking at all the filters which prevail in the PM Gati Shakti, what will be the footfall, what kind of connectivity it has, where are the railway stations or ports connecting these areas, and so on. If the filters are looked into and any state comes up for these mega schemes which we have announced, they can stand to benefit. So that is one of the reasons we have chosen not to mention the names of the states for these particular mega announcements. Any state can qualify and come and in the challenge mode benefit from it. Sir, since I'd rather get to answering members and their issues, I'm not going to talk about the receipts and the expenditure. One point that I would certainly want to highlight is, whilst gross receipts, non-tax receipts are all mentioned in the budget speech itself, banking and credit availability, in order that industries can grow, has also seen a considerable growth. The total credit has expanded by 13.8% in the current financial year. That is, as of 15th January 2026, for the year ending 31st March 2026. The non-food bank credit has grown 13%, and the non-bank credit, that is the NBFCs, has also shown a growth of 15.4% in the same period. So the high-level Committee on Banking for Vikasit Bharat will comprehensively review the banking sector and align it with the next phase of growth for India. So, sir, therefore, without getting into the details, once again, since they are all seen in the budget speech itself and the budget documents are available,
I would seek your indulgence and start responding to the points which members have raised. Sir, central government is slashing funds allocated for various schemes and therefore is able to maintain the fiscal deficit number as given. So several prominent speakers who spoke about slashing of funds at the revised its estimate stage. So leading them to conclude that public finance is not managed well, or it's a deliberate attempt, I would think, to mislead the House. It's not right to say, sir, that we have slashed funds, and I will get into the specifics. Before I get into the specifics, I'll also give a bit of a background. In the past, sir, success was measured by how much money was pushed out of the treasury, regardless of whether it was actually being spent or not. Money is allocated, money is given, it's gone there, it's lying there, whatever be the outcome. Thousands of crores kept lying idle in the bank accounts of implementing agencies. At the state government or while the central government, sometimes you borrowed money, you gave it, and we are paying interest on it. So it also created a huge float in the banking system. So clearly, a glaring need for reforms in that aspect was before all of us. So through the public finance management system, the single nodal agency, SNA Sparsh as we call it, we have now absolute visibility of where the money goes, where it remains, where it gets spent, where it doesn't get spent, and where it is lying idle. We have a clear visibility. And equally, this system has given us the advantage that just in time we can release for the state which wants the money for that particular purpose, and that will be based on the state's own share which is getting spent. So the state put their own share and spend the earlier installments given by the center, after which the funds under the scheme are released further to them. So strictly the money goes when it is required and gets utilized, and on getting utilized the second tranche goes, and so on. So sir, we do not blindly release more just because we need to book expenditure. We do not do that. We ensure that the money is released only when the ground level work demands it. And on that, the state and the center can have a conversation, and if it requires, we will release. So I would like to categorically state that there is no denial or stopping of fund to any state or any scheme. So, through the SNA Sparsh, therefore, we have created a system which is we have installed such smart staff fixed by the leaky pipes. Fix the please, let her complete her speech, please, This isn't slashing expenditure. Please, it's efficient and accountable governance. It's an assurance to the taxpayer that every rupee is accounted for. It's an assurance to the taxpayer, I repeat, that every rupee is accounted for. Sir, and therefore, I'm not just talking you here. Please take your seat. Every time you cannot disturb the house like this, please take your seat. I have introduced a new Nothing will go on record except the finance minister's speech. I have introduced a new statement 4AA in the expenditure profile which shows fund balance under single nodal agency accounts. He will reply all your questions. Please take your seat. In respect of centrally sponsored schemes. So, sir, the center's funds are not a free pool of cash that can be used
It is hard-earned contribution of every Indian citizen. We refuse to squander this money simply to meet a deadline. We refuse to squander this Please take money your seat. just because we have to meet a deadline. There is a very transparent process and we go by that. The change in the allocations of budget estimates and revised estimates is a standard, transparent and healthy practice, which is not new to us, it's been there always. Sir, I think sometimes we have to get to some of the details. There's a poor history, for whatever reason. I'm not pointing fingers at anybody, but poor history for accounting or not spending fully, particularly in social sector schemes. And that becomes a very big issue when we have to talk about it. What are the causes, sir, for underspending? Policy paralysis, disdain for governance, poor policy planning and execution. So large unspent funds remain there, particularly in the social sectors, schemes, and I will now compare our 10 years with the earlier 10 years also. There can always be an observation saying, okay, now you have 10 years, why can't you? We are improving, but 10-year patch of the earlier government, look at the amount of unspent amount. Sir, 14 major social and rural sector ministries. I've taken them, 14 major social and rural sector ministries, compared 2004 to 14 with 2014 to 24. Because the concern comes about unspent money, you're remaining without spending, you're crunching that, and therefore you're having fiscal discipline, fiscal deficit number achieved. No, I want to tell you that between 2004 and 14, in these 14 major social and rural sectors, 94,060 crore of budget expenditure was left unspent during the UPA era. 94,060 crores. Now, between 2014 and 2024, that has drastically come down to 1%, meaning 37,064 crores is all that is left unspent in these 10 years. So when 94,060 crores of budget was left unspent, it made up for 6.4% cumulative budget estimate, whereas here it is just 1%. Under NDA, Prime Minister Modi's government, only 1% in these social sectors are remaining unspent. I want to place these data because it's important. Why? Just as questions are being asked about these monies are remaining unspent, you're crunching this number and therefore fiscal discipline, equally, the very same people would ask about, what's your debt? Why is it growing? Why are you borrowing so much? I find पारस्परिक विरोधाभास है इसमें. खर्च नहीं करोगे और खर्च हम ज्यादा कर रहे हैं मगर खर्च नहीं किया, और इधर बोल रहे हैं नहीं खर्च करो उधर मगर बोरोइंग क्यों बढ़ रहा है? बोरोइंग बढ़ेगा जब कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ना चाहिए क्योंकि एसेट क्रिएट कर रही है. So this mutual contradiction has to be resolved by people who are asking this question. Congress sheds crocodile tears about rising debt. Sir, you want us to borrow more money and release funds also to the states? I want to say this, sir. Government cannot borrow excessively. That's a principle which guides us. The Congress is obsessed about outlays. Kitna outlay? Isme kitna diya? Kitna diya? Kitna diya? मगर हम तो मांग रहे हैं कि पैसा भी देंगे मगर आउटकम भी दिखाओ. सो कांग्रेस को खर्च के फिक्र है, हमें नतीजों का फिक्र है. Naysayers, of course, will say, oh, this budget is parsimonious. Not at all. If you are conscious of the penny or the rupee, the paisa that you're collecting from an Indian citizen and wanting outcomes,
you will have to be careful about how monies go, when they go, how much goes. And that is exactly the principle with which the prudential public finance management, which Prime Minister Modi guides us, is be sure that my money is not lying idle somewhere. You should know why it is lying idle, get the outcomes there. So that is the route with which we are going, sir, so that the zamana of 15 paisa only goes out of that money which is being sent to the state. वो चला गया. मोदी जी के समय पर हर पैसा जो जाना है वो जाएगा. इसीलिए 2014 से more than 48 lakh crores have been spent on various or have been sent directly through DBT to various beneficiaries. And because it is DBT, we have saved an estimated 4.31 lakh crores from falling into wrongful hands. That saving is very clearly paisa not being allowed to go to hands which don't have a right to receive that money. That is possible only because we have made the entire process digital and transparent. So 48 lakh crores have gone to people who need to get it, and that's not a small achievement, sir. Technology has helped us, I should concede that. So Congress party announces big, spend blindly without even accountability, without any accountability, borrow more, and ruin the fiscal discipline, which is not the story under Prime Minister Modi's leadership. Fiscal discipline, equally without giving attention to people who need those welfare projects. I will repeat that one particular scheme through which this argument holds validity. Oil bond issue, sir, which was created during the UPA time. We will be paying that even now. We are repaying it even now. My grievance with oil bonds, sir, is that it was never reported in their budget. कुछ और नहीं है, बॉन्ड रेस करना है, रेस करो, तो क्यों बजट में बोला नहीं है? उसको क्यों कारपेट के अंडर पुश करके छोड़ दिए? वो है. इसीलिए the basic principle of responsible budget making is something which we have steadily, and I'll tell you in a bit, how every year we've brought in greater transparency in our budget making process. Sir, another allegation is schemes have been announced without any budgetary allocation. Announce karte ja rahi ho, uska paisa nahi de rahi ho. So I want to say, sir, budget speeches give a policy directive also, other than announcing schemes. Or it may announce schemes with allocation, and sometimes it may allocate resources a bit later. So announcing schemes without allocation itself is not saying the truth, complete truth. I would like to say, sir, the number of instances when budget speeches earlier made had announcements with no allocation. But before I go into that, I will like to elaborate on, in this budget, 16 new schemes have been announced with allocation. 16 new. I can leave the list on the table, sir, with your permission, for any member who wants to see. 16 new schemes with allocation, and 4 schemes where existing schemes have been given top-up amounts as well. So 20 schemes with allocation, new ones 16, and 4 existing getting top-ups. But the earlier examples of UPA, where budgetary announcements were made, no allocation were made, that wasn't criticized worthy at that time, but when we do it, it's criticized worthy. But I see budget documents as budget speeches as much more than just giving schemes and allocation. They are also setting the direction. 2005-06 budget, sir, UPA governments. Manufacturing competitiveness program was announced as a new scheme with no financial outlay. Skills development initiative in the same budget was announced, no financial outlay. Mumbai as a regional financial center was announced in the same budget, no outlay.
National Institute of Securities Market. It's a policy directive, and I can recognize that that's not a scheme in that sense. It was a policy directive given to a regulator saying, set up your own Institute of Securities Market. And that was only right. You couldn't have allocated anything. So, several announcements without outlay, sir. But no, it is sin when we do it. Tea industry rejuvenation. I want to say this now very clearly because I quote this from the 2005-06 budget. But मैं जरूर इसको बताना चाह रही हूँ क्योंकि वेस्ट बंगाल में चुनाव है, असम में चुनाव है. मैं बात बोल रही हूँ 2005-06 में टी सेक्टर के लिए कुछ अनाउंसमेंट हुआ. टी इंडस्ट्री का रिजुवेनेशन के लिए टू फाइंड एंड उसके लिए वो सेक्टर क्राइसिस में है. सो गवर्नमेंट वुड, मैं कोट कर रही हूं उधर, would examine ways and means of introducing a program for massive replantation, unquote. कोई budgetary allocation नहीं था उस समय. वो ठीक है, मगर इधर एक आध स्कीम का अनाउंसमेंट हुआ क्योंकि उसमें कारण है, मैं कारण भी बताऊंगी, मगर वो गलत है. ये क्रिटिसिज्म हमारे ऊपर डालने से पहले कम से कम उनके अपने बजट ही देख लें. प्लीज have a look at the budgets which you have announced, in which many schemes went about without any allocation. 2012-13 UPA budget, sir. Credit guarantee fund for education loans. No financial outlay. And that was setting up a fund for ensuring a better credit flow to students who wanted to take money. No outlay. Credit guarantee fund for skill development. Again, 2012-13 budget, no monetary allocation. National Mission on Food Processing, no financial outlay, even in that 2012-13 budget. Irrigation and Water Resource Finance Company का घोषणा हो रही है, मगर उसका भी allocation कुछ भी नहीं बोला गया. ये सब ठीक है, मगर हमारे यहाँ जहाँ 20 स्कीम्स का अलोकेशन के साथ घोषणा होती है, एक आध में जानबूझ करके अलोकेशन नहीं है, मैं कारण बताऊंगी, मगर वो गलत है. एक कैसा क्रिटिसिज्म हो सकता है सर? One more similarly UPA budget 2011-12 नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी अनाउंस किए हैं. मालूम है कि पॉलिसी है वो, फिर भी 2014 तक, क्योंकि ये 11-12 के बजट है, 14 तक उसमें कोई कुछ एलोकेशन नहीं है, कोई कुछ ग्राउंड लेवल में काम दिखे नहीं, मगर हो गया अनाउंसमेंट विदाउट एनी एलोकेशन. वो ठीक है. सो क्रिटिसिज्म करने से पहले थोड़े सोचना चाहिए कि ये क्रिटिसिज्म, जैसे बोलते हैं यू पॉइंट वन फिंगर दैट साइड 3 पॉइंट्स एट यू, ये तो कम से कम समझ में लेना चाहिए, आना चाहिए. सर, क्यों हम, उनके सरकार हो हमारे सरकार हो, क्यों बजट में अनाउंसमेंट करते हैं बिना अलोकेशन? इसका भी हम महत्व समझना चाहिए. In the interest of the House and the other larger citizens who watch, I would like to state why union budget is more than just an accounting statement or allocation exercise. Very often, budget speeches set the policy roadmap for the government. Often, the government wants also to signal a shift in strategic priorities. So, announcing the scheme in the budget speech establishes that executive intent. सरकार की intent establish हो जाता है. फिर at an appropriate time, after proper vetting and clearing of by the competent authorities, the allocation will come through. In many cases, sir, the schemes get announced with some token allocation, 1 crore, 10 crore, 100 crore, depending on the scheme. Then a head of account is created in the ledger. उसके बाद ही उसका major allocation का announcement होता है. It can happen during supplementary demand for grants later in that year. Sometimes a scheme is announced, but it requires an enabling legislation
सो लेजिस्लेशन पारित होने तक हम इंतजार करते हैं, इसमें अलोकेशन नहीं देते. सो आई एम सॉरी, many of the वरिष्ठ मेंबर्स नो ऑल दिस, फिर भी क्योंकि ऑपोजिशन में बैठे हैं और क्रिटिसिज्म तो सरकार के खिलाफ करना है, सो हम करेंगे. एवरी पर्सन even remotely associated with the finance ministry understands all this, but I was surprised to hear it. Sir, also there was this a bit patronizing comment, if I may be allowed to say it. The budget is forgetful of the past. Budget is never forgetful of the past, at least because those which we don't need to copy, I will never be forgetful of the past. Sir, glorious past hai to cherish it forever. Remember it every time. Every time you make a budget, remember it. But if it is a tarnished past, मैं तो संभाल कर रहना चाहती हूँ, उस पास्ट से सीखना चाहती हूँ, गलती ना करें. So we don't forget. This budget is not forgetful of past. It remembers the fragile 5 days. It remembers the double-digit inflation days. It remembers the policy paralysis and also the scam-filled days. It remembers banks were forced to lend just with a phone call without doing any KYC or anything of that kind. Deficits were kept high and spending on capex was reduced. So, shrinking opportunities, and उस समय का नारा ये था jobless growth. मैं जरूर ये सबको ध्यान में रखूंगी, forget नहीं करती हूँ past को, मगर उससे सीखने लायक विषय ही सीखती हूँ. Of course, I don't need to elaborate about the even earlier license quota Raj, how that economy had to be changed and so on. इसीलिए 2014 में ना करते हुए 10 साल के बाद हमारी सरकार व्हाइट पेपर ले आए on the Indian economy, and it was laid in this house in February 2024. So past को forget करना impossible है. So now I want to just say, I'm not sure how to take this. Former FM P. Chidambaram ji, in 2023, addressing the audience in a media conclave, had said that he credited the BJP-led NDA government for its single-minded focus on containing the deficit and on debt management. He said it in 2023. And today, in 2026, that circumstance which he took into consideration and gave this comment has actually only improved. It is actually only improved. So there's no way that comment which was given in 2023 can be changed. If anything, appreciation will have to be more. But today, we find that you're finding fault with our debt management. It doesn't add up. So then, I move on to talking about, again, debt to GDP, which was raised by, I can't see the honorable member, Raghav Chadda. So, this is not a new change, sir. When we are focusing on debt to GDP, it's not a new target. There was an amendment done in 2018 to the FRBM Act. In that itself, that change was brought in. So I just want to inform the member that if he had not noticed it then, it's worth noticing that it is not new. Also, sir, the point that the middle class is being sandwiched was raised. I'm sure many honorable members thought they had some common cause with that allegation which was being made. I want to very clearly bring the data out to say the conclusion that the middle class was being sandwiched was being made because personal income tax collections exceeded the corporate tax
that is fundamentally misdiagnosing the situation. There's no evidence of middle class suppression. Actually, there is enough and more evidence of historic middle class expansion and formalization driven by the economic reforms that have been undertaken in the last 10 years. High personal income tax collection is not necessarily middle class being crushed. I'll give you the reasons why. There are more people today with income that is taxable. More income is visible and in the formal sector, and it is being reported. So the economy is no longer narrow, and it's not just confined to the elite. Middle class basket is widening. Between 2013-14 and 24-25, the number of taxpayers, that is, people filing returns or with TDS deducted, rose from 5.26 crore to 12.13 crores. So within the last 11 years, more than doubling has happened in the income taxpayers' numbers. So obviously you learn more from it. And what is the growth therefore, sir? CAGR of 7.9%. So that is the largest structural expansion of the middle class in this country. So suppression cannot happen if the tax net is widening, and if the net itself is widening, it's not because of suppression. People are coming on board to pay. And coming on board to pay, not because we are bringing more rates. On the contrary, even as this expansion is happening, income tax limit has increased to 12 lakhs for everybody, and for those in salaried class, 12.75 lakhs तक आपको टैक्स पे करना ही नहीं है. So suppression का बात कहाँ आती है सर? अगर 12.76 लाख तक salaried class को टैक्स ही पे करना नहीं है, कहाँ है suppression? Second, standard deduction has also been enhanced. New tax regime has simplified filing and due diligence करने वाले काम को भी simplify कर दिया. Next generation GST rationalization has also lowered household costs. उनके monthly खर्च कम हो रही है क्योंकि GST में हर item का rate कम हो गया है. Inflation also is at a historical low. So somewhere middle class के ऊपर ये शब्द suppressed cannot coexist with real incomes rising and with record low inflation. And there is an upward mobility of workforce as well. So ये थोड़ा मुझे समझने के लिए fact रख रही हूँ सर. So I move to Honorable Member Wilson. He said, rising debt again. Itna debt, it's not good. So I just want to highlight the fact, sir. The principle is one. We have to take care of reducing debt, whichever be center or state or everybody. And in this, not a member of this house, but with your indulgence, I like to quote the former Chief Minister of Tamil Nadu, Edappadi Palaniswamy Avargal. He said, and I quote, "For 73 years, successive governments in Tamil Nadu accumulated roughly 5 lakh crores in total debt." 73 years it took 5 lakh crores to be accumulated. But in just 4 years under the DMK government, since 2021, 4.56 lakh crores have been added to this pile. 73 வருஷத்துல பண்ண அந்த அமௌண்ட் 4 வருஷத்துல பண்ண கணத்தை இவங்களுக்கு போகணும். சோ அது தமிழ்நாடு ஸ்டேட் கவர்மெண்டோட borrowing ஜாஸ்தி ஆயிட்டே போனா ஆனா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் மட்டும் just giving a reply to you.
You by the let lobby our. Sir, we are listening to her very quietly. She is also talking whatever she wants to tell us. She is giving advice. We'll take her. But the Tamil Nadu government has committed nearly 4 lakhs crore debt. Earlier it was like that. Are you speaking on Tamil Nadu budget or Indian government budget? This is not fair because election is there. And AIDDM No, only 1 minute. Leaders quote she is doing it. Outside speech, who is nothing to do with this house. This is unfair, and I condemn such. He is giving an answer to a question raised by a member of this house. Please. Tamidaraji, please take your seat. Tamidaraji, please take your seat. Tamidaraji, please take your seat. Please take your seat, all members. Please. Sir, thank you very much, sir. Sir, when you stand up to answer criticisms, you will bring in facts. Sometimes facts can be very difficult to digest, but I will state it because they are facts. Okay, sir? No. Why you are having word? She is quoting on quotation only. Please, Tamidaraji. Sir. Nothing will go on record. Please, Tamidaraji, please, by the except finance minister's reply, nothing will go on record. Please, all of you, please take your seat. Sir, with your permission. Yes. Since John Brittas ji is saying something, on that specific point I want to answer him, sir. Honorable member Tambidurai, senior member, who's been, deputy speaker in Lok Sabha, has said something, I value it. But you think it's because we are in alliance. What is Dr. Shri Mallikarjun Kharge standing up for DMK then? Is it not also alliance? Yes. So that's okay. This is not. What is that? John Brittas, keep off. So for all of you, don't you say that here. Bitaji, for all of you, our opposition leader has given the answer. Please, yes, that's all right. I take it. The moment Minister, please address to me. Please. Sir, Chairman, sir. Nothing will go on record except the finance minister's reply. With due respect to the LOP, the moment he stood up, I sat down to hear his view. So I respect it. But if there are insinuations that because they are in coalition we are speaking, that is also coalition, sir. Oh yeah, that's also in doubt now. Oh, John Brittas, that is in doubt. I correct my statement because Congress is not sure whether they want to be with DMK or not. Finance Minister. Okay, and in Kerala too, you. Finance Minister, please address to me, please. Sorry. Tamidaraji, you please take your seat. All of you, please take your seat. Please. Sir, now I'll specifically answer Kanimuri NBN Somu, who's an honorable lady member of the House. She said, No. Sir. Sivarajinji, you please take your seat. She is replying to another member's speech. Let her reply. Honorable member Kanimuri had raised, Tamil Nadu there's nothing for Tamil Nadu in this budget. Sir, I just want to mention what is in this budget and maybe answer her question. So, what did Tamil Nadu get? High-speed rail. Chennai is a major node with 2 high-speed corridors. Hyderabad to Chennai, Chennai to Bengaluru. Second, sir, rare earth corridor. Tamil Nadu is explicitly named for a dedicated rare earth corridor. And if I may add, the only state to have 2 corridors, defense corridor, rare earth corridor as well. Third, Adichanallur Heritage Development is selected among 15 sites
for experiential heritage development with conservation labs and curated public access. Fourth, ecotourism trails. Budget has announced bird watching trail in Pulikat Lake and mountain trails in Podigai Malai, both of which in Tamil Nadu. 5, coconut promotion scheme which will replace old and non-productive trees with high-yielding saplings in major growing states, inclusive of Tamil Nadu. 6, of course, Kerala. Tamil Nadu is being... Sir. No, I want to ask you one thing. You don't want the coconut grower to get benefited. You tell me that. No, please take your seat. Why you are interfering? Let every coconut farmer get the benefit of the please. First listen to Tamil Nadu. Finance Minister, please. Finance Minister, please address to me. Sir. Please address to me. Fisheries, duty-free high seas fishing and tripled duty-free input limits 1% to 3% for seafood processing, boosting coastal Tamil Nadu incomes and exports. Other than that, sir, this is the 6th item. 7th, textiles, modernization and employment program under Samarth Plus, Samarth 2.0, skilling for Tirupur, Coimbatore garment clusters is not for Tamil Nadu. 8th, leather and footwear, duty-free inputs extended to shoe uppers and export window extended from 6 months to 1 year. Import something duty-free, do your work, export it not within 6 months, export it even after 6 months till 1 whole year. That will give comfort to small manufacturers. So leather, and that will directly cut costs for units, small units, which are in Ambur, Vaniambadi and Chennai. That's not Tamil Nadu, sir. Then, automobile and electrical vehicles, customs exemption on capital goods for lithium-ion cells, critical mineral processing, strengthening Chennai-Hosur EV ecosystem. And the 10th, sir, girls' hostel. 1 hostel per district. 38 hostels can be built in Tamil Nadu. That's not for Tamil Nadu, sir. And even better. And even more. And even more. Sir, when we said city economic regions, where we are giving from Government of India 5,000 crore per city economic region for 5 years, 1,000 crore per year. Tamil Nadu's urban agglomerations like Chennai, Coimbatore, Madurai can all be contenders for it. They can get it for themselves if only they come and bid for it at the earliest. Similarly, sir, B, you asked for it. No. But Minister, please understand me. Yes, sir. Sorry. Yes. Regional medical hubs. India's healthcare capital, everybody claims, I also accept it. Chennai is well placed to secure one of the 5 medical hubs that we want to establish for care, education, research, and for Ayush. They can have a medical hub. Similarly, university townships, sir, Tamil Nadu can bid along CBIC, that is a Chennai-Bengaluru corridor, or the East Coast corridor, which goes Chennai to Kanyakumari. Have a university township or a chemical park. 3 plug-and-play parks can be aspired for. Manali, Kadalur are all places where chemical industries are located. So are these not for Tamil Nadu, sir? Sir. Tamil Nadu MP should thank Finance Minister now. Sir, health. There are several members. I'll name some of them. Randeep Surjewala ji, Ashok Mittal ji, Rajiv Shukla ji, a lot of them mentioned. Heal in India is something which we announced several budgets ago, and we continue to build on that. Now 26-27 budget strengthens the entire health value chain. Healthcare infrastructure is being improved. NIMHANS is a very reputed institution in Bengaluru.
We want to build one such an institution somewhere in the north. And whichever state wants to bid again can aspire to have it. Other than that, the institution which exists in Ranchi will be upgraded. Other than that, the institution which exists in Tezpur, both of them will be made regional apex centers. So we are improving on the infrastructure. Also, we are expanding by 50% the emergency and trauma care capacity in the district hospital level all over India. For the district hospital, emergency and trauma care is being improved by 50%. Also, sir, the workforce pipeline will be expanded decisively because 1 lakh additional allied health professionals for the next 5 years will be created, and they will be serving within India or find jobs anywhere else as well, but they will be qualified. 4, a care system, a care ecosystem is also being carefully nurtured. 1.5 lakh caregivers for elderly, for wellness, and for medical device operations are being readied. This year itself, they will be available as skilled caregivers. So other than this, 1,000 crore for allied health professionals is also being allocated in this budget. More than that, the medical value tourism, 5 regional medical and integrated hub is being planned. It will combine hospitals, education, research, diagnostics, and Ayush facilities. All of them will be available in that large hub. So India wants to position itself as a healthcare destination. Other than this, the 7th point on healthcare, on health sector, Biopharma Shakti, 10,000 crore mission is being created with 10,000 crores being provided. And that will take care of getting biologics and biosimilars, particularly for diseases like cancer, diabetes, chronic diseases, life-threatening diseases, and so on. This will be supported by 3 new and upgraded NIPERs, which is the National Institute of Pharmaceutical Education and Research. Already there are 7 NIPERs in this country. We will be adding 3 more to them. A national network of 1,000 accredited clinical trial sites will also be established so that science-based approvals can be given for tests that they do. So that is also for health, sir. And the 10th point that I want to say is full customs duty exemption for 17 cancer drugs have been given. Inclusion of 7 additional rare disease have also been made so that duty-free medicines can be brought for them. Reduction of TCS on medical treatments, treatment remittances which go out of this country through the LRS. People send money because they have to go get treatment. For that also the TCS has been brought down from 5% to 2%. Then 11th point for healthcare. 3 new All India Institutes of Ayurveda will be set up in this country. Upgraded drug testing labs, expanded evidence-based research will all happen. The WHO recognized traditional medicine center which is also going to be expanded. Other than that, sir, for Divyangjan, for assistive healthcare, we have made assistive technology marts from where they can easily take equipments which they need for ease of living, and we have enhanced the capacity of Alimco, which produces such assistive devices for Divyangjan and for senior citizens. So finally, allocations, sir. Department of Health Research sees a significant jump, 4,821 crore, which is a 23% increase is being allocated. 4,200 crores is being given for PM Abhim, which actually is for improving health infrastructure in the states. So that also goes towards state. It is not being kept here. We recognize that health is a state subject,
but despite that, we will enable them to improve on the health infrastructure. Sir, the next one, sir. The poor, there is Please, high inflation. please, There's this, please, there is this claim, oh, there is high inflation and therefore common citizens are suffering. I want to highlight the facts, sir, basic facts. Inflation is at a historic low, even though growth is at a high. There is no inflation crisis in India today. Inflation has been tamed, anchored due to stability and the steps taken by the government. Retail inflation has actually been on a downward trajectory from 6.7% in FY23. It has come to 1.7 in FY26. I want to highlight the fact that there will be a new CPI basket and announcement being made by the MSME soon. That will be updated. Consumer price index will be determined on that based on a new base year. But in the current series, based on that 2012 base year, sir, which on the basis of which data has been released from January 2015, clear 10 years in this data cycle of the CPI, the inflation has never been lower than this. 2011-12 base year, उसमें 2012 का number को 100 मानते हुए, if you go on calculating after that, 2015 से वो data भी बाहर आ रही है. 2015 से लेकर 25 तक, इससे कम कभी inflation नहीं हुआ करता था. It was never low as much as it is today. So people who are saying high inflation, it's hurting people, kindly look at the data. And just want to compare it with advanced economies, sir. UK is at 3.4%. US is about 2.7%. Many emerging markets have not seen this kind of a number. So India is actually maintaining its inflation low, not by chance. It is actually a strategy. I want to clearly tell that we have made sure not just blunt monetary tools, but we have a calibrated mix of fiscal policy, trade policy, and also supply side interventions that we've made over and over again, as a result of which today inflation is where it is. Just for example to say that there are conscious efforts taken by the government which is resulting in inflation being low. Dynamic duty management. When edible prices go up, we make sure that the basic customs duty is brought down proactively, so that, take the example of June 2025, sir, it was reduced to 10%, as a result of which immediately we could get some edible oil and make sure the market didn't suffer for want of edible oil. So when at the same time, in case the price comes down too much, that our farmers might get affected, we quickly go in and raise it so that farmers don't get affected. So dynamically managing duty on commodities which can come into the country. Second, actively maintaining a buffer stock so that as and when the prices are likely to go up, we release the stock and calm the prices down. This is actually validated by data in the last 4-5 years. We also have made sure that railways will make sure logistics is provided for edible items which have to move to different parts of the country at a lower price. Every commodity going on the road with diesel costs and truck and logistics delay might increase the price. So we have ensured that railways will be the route through which many of these goods will move to different parts of the country. So that's also part of the dynamic management. Third, sir, GST rate rationalization, all of us have spoken about it. We kept doing it in piecemeal. At one go in September 2025, I will thank the GST Council. Unanimously, the rates were brought down for across the board to all common man items. And the fourth, sir, we gave support to agriculture. India recorded a historic cereal production
of 3,320 lakh tons in 24-25. So when our annadata are producing and giving, we are able to also make sure that the prices come down. No, announcement come morning. No. Sir, inflation control thereby, inflation control has been completely, because of the dynamic system with which we are working in tandem with the RBI, it has been kept below the tolerance band. Sir, employment and unemployment has also been discussed. I would like to place the facts, sir. Indian labor market is undergoing a structural transformation with record low unemployment. India's unemployment rate has actually fallen structurally, you can see it, from 5.6% in 2017-18 to 3.2% in 23-24. It's actually unemployment has come down. The economy is actively absorbing labor. In Q2 of financial year 26, which is the current year, sir, 56.2 crore people were employed. Just in this one quarter, 56.2 crore people have been employed. 8.7 lakh net new jobs have been created in just 3 months. So, the annual survey of industries She will come every point. Please take your seat. Please let her take her water. Please you take your seat. Sir, Please address to the chair. Sir, annual survey of industries records a 6% year-on-year increase in manufacturing sector employment, adding over 10 lakh organized sector jobs in a single year. Importantly, the job quality is also improving. Large factories, which is 100 plus workers jisme hai, large factories, nearly doubled in the last decade, and their growth is 6% CAGR. So it clearly shows that there is more stable and higher productivity with better paid jobs. Sir, also, the total estimated employment in the formal manufacturing sector showed a robust growth, 5.92% in 23-24 over the previous year, 22-23. More importantly, sir, I'm sure members will be happy, the female workforce participation has also nearly doubled from 23.3% in 2017-18 to 41.7% in 23-24. 26.2% of proprietary establishments are now female-headed, with manufacturing leading this shift. So, economy where women are entering workforce and entrepreneurship at this scale, sir, cannot be an economy without jobs. Growth without jobs was the UPA era story, not now. Sir, gig economy is also expanding. I don't need to highlight that. I'm sure all the members are conscious. The gig economy expanded by 55% from 77 lakh workers in 21, the financial year 21, 120 lakh in FY25. So, e-Shram portal, over 31 crore unorganized workers have been registered January 2026. So all of them are also getting covered under social security. 54% of these registrants are women. So I have more to say on skilling, labor codes and they think I will hold on there, sir, because there are few more particular
questions. Entertainment industry. Honorable Member Jaya Bachchanji had asked this question. I want to say there is nothing in this budget for the entertainment industry. I'm very sorry to say, sir, she's a senior member. That's not right. This budget actually has entertainment. Actually, one of the earlier announcement also that sustained work attention has been given. We treat the industry, we treat that sector as an industry, and the budget recognizes AVCGC, animation, visual effects, gaming and comics, and the content creation economy as a growth engine. And as a result, support has been announced. Indian Institute of Creative Technologies, which is in Mumbai, will now help in skilling and creating content creator labs in 15,000 schools across the country. 500 colleges will also have it. 2 million professionals will be created by the year 2030 because that will be the requirement of that sector also. Now, content creating is not what we commonly hear, oh, he's a content creator for social media. No, it is a highly skilled effort where art, drawing, and also storytelling all become part of the digital world, and they have to create it for the digital universe. So it's a highly expertise-based sector, sir. So that actually has been announced. So that will feed into VFX, gaming, OTT, animation, post-production, and design. That's the backbone of the entertainment industry. So that's what we are doing. Other than that, the budget creates new monetizable work for these creators. The National Destination Digital Knowledge Grid is also designed to document cultural and heritage sites, is explicitly generating jobs for these filmmakers, digital storytellers, editors, animators, and researchers. So we are not just doing any token gesture towards this area. It is actually being given the prominence and the resource allocation. A new National Institute of Design is also being announced. There is skills shortage in the production of design, costumes, sets, and visual aesthetics. We need people who need to be trained in these areas as well. So the biggest intervention, other than what has been announced in the budget, biggest intervention other than what is being announced in the budget is when we held Waves 2025. Waves was a global industry platform. Over 90 countries participated in it. 10,000 plus delegates were there. 1,000 creators were there. More than 300 companies were there which participated in it. And 350 plus startups and nearly 1 lakh footfall was seen in that event. So are these not efforts towards entertainment industry, sir? I want to inform. Okay, please address to the chair. So this orange economy concept itself, which we brought in, are all aimed at the entertainment industry. So I want the honourable member to take cognizance of these announcements. See, are you yielding for Jaya Bachchanji? आराम से Please. सर, अगर आप जो मैंने कहा उसको अगर ठीक से पढ़ें, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया. You're a great storyteller, ma'am. Congratulations. For us, great entertainment. But I have also talked about tickets. देखिए, मैं चुपचाप खड़ी थी, आप लोग don't do this. Sir, you get the house in order. You please address I to the chair. spoke about the entertainment tax. I spoke about tickets. What about this? I'm not talking about institutes of design.
I'm talking about the industry, entertainment industry. We are some of the highest tax-paying individuals of this country. Okay, you please take your seat. What a... No, Minister, we have to go for another business is waiting. Sir, I thought I have quoted the honourable member's observation when she said, let me finish now. You please address to me. Now that you asked something more, I have to... Honourable Minister, please address to the chair. Honourable Minister, please address to the chair because another legislative business is there. I understand, Please, sir, but please. I have to do justice. You Therefore, please address to the chair. Sir, I want to highlight the facts, sir. I have not finished because there was new question asked, and I will have to answer that as well. Sorry? You know, समझ में नहीं आता है तो मत Sorry? सुनो. If you don't understand, let Finance Minister speak. Finance Minister, Please. Nothing will go on record. Nothing cross-talking will not go on record. आप बैठिए, please, आप बैठिए. Honourable members, please बैठिए. Honourable Minister, please address to the chair. Please address to the chair. Sir, Sir, there was an honourable member who had raised an issue and I was giving an answer. Maybe the honourable member is not satisfied and therefore she stood up and mentioned something more. And I will certainly attempt to answer that as well. But if this is objectionable and there are commentaries and finger pointing, doesn't behove well. No. You please take your seat. Nothing will go on record except Finance Minister's answer. No. This is not correct. So, just to stand up and point a finger and shout somebody else down is not going to help, sir. I will wait and answer that. No need. I've given the data. If you don't want to listen to that, don't gesticulate. Address to me. Address to the chair. Don't give a running commentary here. Vocal cords are not given only to you. Vocal cords are there with everybody. Please address to the chair. Nothing will go on record now. A member has asked a question. Nothing will go on record. Please take your seat. A member Please has asked address a to the question. chair. I yielded with your permission. I am willing to answer further for the question that she's answered. Please answer Ask to me. her. Why should it irritate other members, sir? When their turn comes, they can ask your permission and ask me a question. I will answer them. And this kind of a running commentary, gesticulating from seats, I'm sorry, I'm sure you will not entertain that. the Finance Minister politely yielded. I yielded and I will answer. The honourable member, sir, I've answered. Maybe she's not satisfied, but on the specific question where she's raised, the ticket prices, entertainment industry is suffering because these prices are too much, I must humbly submit. Entertainment tax, ticketing of films are all state subjects, sir. No point in asking me. Further, sir. Sufficient efforts have not been taken up for senior citizens is a point which was mentioned by one of the honourable members. I want to respectfully submit. You had enough time I have been given. Please, Baitia. Our culture has taught us to pay utmost respect to our elders. No. Nothing will go on record except Finance Minister's speech. You please take your seat. Please. Sir, our culture teaches us to pay respect to our elders. Union Budget 26-27 has made several announcements for senior citizens. I want to say that, sir. We have announced the building of a strong care ecosystem that specifically covers geriatric
and allied care services. Let her answer. You please take Allied your seat. care. No, you please take your seat. Let her answer. Let her answer. You please take your seat. This No, includes this I am not going to allow. You please take your seat. target. No. Devajanji, this is too much. You please take your seat. Sir, this includes a target to train 1.5 lakh multi-skilled caregivers, which will benefit the senior citizens. Geriatric care is what we have openly said in this budget. Also, we are ensuring professional support is available for the elderly. Also, the 1 lakh allied health professionals that we will provide for the healthcare will also be helpful for our senior citizens. Second, sir, the assistive technology marts that we are establishing, through which modern retail style centers are being provided, these technology marts will allow senior citizens and also Divyangjan to see, to try and to purchase assistive products. This is also for senior citizens, sir. Also, custom duty has been exempted for 17 cancer drugs and 7 drugs of rare diseases. Sir, particularly for senior citizens, Nothing will go on record except Finance Minister's reply. Honorable Leader of the House. Honorable Leader of the House, please. I need your protection. Honorable Finance Minister is answering the debate, final debate, and the way the opposition members are raising the issues, I think they should restrain themselves, and we should see to it that the debate should go in a healthy manner. She's answering, Honorable Minister is answering every... No, please, madam, I stop. respect you. You please take Please your seat. respect my words also. You please take your seat. Please respect my words also. She is answering every question, and even she has yielded thrice. Sir, I think there is no need for the... Oh, John Bidas, बैठ जा यार. She can yield to every member, please. So, sir, I will request you that let the minister answer, and if there are any questions, she is always ready to answer. But let the debate continue, sir. Honorable Minister, please address to the chair, yes, please. Sir, so senior citizens are being taken care of, and every budget announcement has something for them. In fact, the BJP manifesto, sir, the BJP manifesto very clearly promised to provide benefits to senior citizens at 70 years or over under the Ayushman Bharat, irrespective of is in 70 years and above, into Prime Minister's Jan Arogya Yojana. So accordingly, free health cover is available, which is 5 lakh per year, is provided for all senior citizens age 70 and above, irrespective of their socio-economic status. And in this is just an announcement, 96.73 lakh Ayushman Biopharma cards have been issued already. 33,000 hospital admissions have happened, worth 2,155 crores, which have been authorized under Ayushman Biopharma Yojana. And this is exclusively for senior citizens. Sir, GST on important items have also been brought down, which will be of help for the senior citizen. 33 life-saving drugs, 0 GST. 5% GST on some medicines, which were higher earlier. GST on health insurance premiums have come down from 18 to 10%, 0%. GST corrective, the corrective spectacles, lenses, contact lenses, all of them have been reduced to 5%. So, actually, senior citizens, I have several things which I want to bring to the notice of the honorable member. Sir, farmers, Nothing will go on record except the Finance Minister's answer, please. So I want to
mention this. Very actually drawing our attention. You cannot take your seat, please. No. I have not permitted you to speak. You please take your seat. Please. Sir, farmers are... There was an observation which will be very pleasing for all of us to hear. Very attractively put, but I'll give an answer for that, sir. Farmers are happy in Texas, not in Tamil Nadu. They are happy in Kentucky, not in Karnataka. Wisconsin, and not in West Bengal. I'm sorry to say that farmers, I want to explain this, sir. He is clearly admitting by naming Tamil Nadu, Karnataka and West Bengal and saying farmers are not happy there. The NDA alliance ruled states are farmers are unhappy. They have to take care of it. The member said farmers are happy in Texas, not in Tamil Nadu. Happy in Kentucky, not in Karnataka. Wisconsin, not in West Bengal. All three are ruled by India alliance. They should talk among themselves and say why are they unhappy. But sir, coming to this point, agriculture is a state subject. Union government works for Sabka Saath, Sabka Vikas. But there are governments like in West Bengal which do not implement the schemes intended for welfare of the people. Please, only 1 minute. I want to make one general observation. Under Rule 235(9), that no member shall not obstruct proceedings, hiss or interrupt, and avoid making running commentaries when speeches are being made in the council. Kindly follow that rule, please. Sir, agriculture is a state. Please take your seat. Madam, you please take your seat. You please take your seat. Please. So West Bengal does not implement the schemes intended for welfare of the people of the state just because it is financed by the center. So how can we be held responsible? I'll give you a concrete example, sir. Welfare of the tea workers. The Pradhan Mantri Shramik Protsahan Yojana. The Pradhan Mantri Shramik Protsahan Yojana was introduced in the budget of 21-22. It was for the welfare of tea workers. The scheme for the welfare of tea workers, particularly women and children, for bettering standards of education which is available for them, for bettering the health services which are reaching them, and for housing infrastructure facility, the government came up with this scheme. Assam, sir, has already implemented the scheme and utilized 293 crores. The West Bengal government has refused to implement the scheme. Now, if they are unhappy, the farmers, is it our blame? We came up with a scheme, utilize it for them. Farmers in the chai bagan are unhappy. Is it because of us, sir? So if you don't implement for a program meant for poor people, and then you say, you know, we are disadvantaged, you're not helping us. I want to say the welfare of 3.79 lakh plus tea workers, the welfare of 3.79 lakh plus tea workers, why should the scheme be stalled for 5 years? They have stalled it for 5 years. And therefore, now if farmers are unhappy in Bengal, who's got to answer them? There was a scheme brought in. Similarly, Ayushman Bharat was brought in. It would have helped even, leave alone those people who are staying in Bengal, benefiting from their own state scheme. At least when they go out to work in other states, Bengal citizens would have got the benefit of Ayushman Bharat wherever they are. No, but we don't want to. But they will come and accuse again for a wrongdoing which happened, maybe one-off case, which happened probably in Telangana or in Tamil Nadu, where they were called with names, Bengali-speaking people. That becomes a big issue.
Now you don't want to benefit these migrant Bengali workers from getting the benefit of Ayushman Bharat? That's not your duty? But no, we will come here only to criticize. Sir, concluding, sir, coming to the end, sir, lot of people, lot of honorable members kept saying you are not funding schemes which were announced. Like for instance, I heard a member from Telangana saying there's no money to... He is answering only to your questions. You please take your seat. Nobody is hating Bengalis. Everybody is liking Bengalis. You please take your seat. I heard a member of parliament saying that they don't get money for the turmeric board. I want to say, sir, the allocation for this is included under the spice board allocation, which has been provided an allocation of 156.89 crores in this budget. So turmeric board also gets the money. Sir, subsidy cut in food and fertilizer, petroleum and so on. Members have said that. I want to say that the total outgo on major subsidies, namely food, fertilizer and petroleum for 26-27 is 4.1 lakh crores. By sitting you are making running commentary. That is not good, please. In the last year. This year, it has gone up to 4.1 lakh crores. Please don't do that. Please don't do that. Similarly, I come to the end by quoting the expenditure on education, saying it's gone up from 41,000 crores to 93,000 crores during the between the period 2014-15 to 26-27. I've spoken elaborately on the allocations for health, defense, and also social welfare, sir. So with this, thank you very much for giving me the opportunity to respond to that. Dr. Mansukh Mandaviya to move a motion for consideration of the Industrial Relations Code Amendment Bill 2026. Please take your seat. Please take your seat. Please take your seat. We have to go on the next. Please take your seat. Mandaviya ji, please. Move. I move the bill. Okay, motion moved. Honorable members, Business Advisory Committee has allotted only 30 minutes for the bill. As per the time allocation based on the numerical strength of the parties, BJP gets 10 minutes, Indian National Congress gets 3 minutes, and all other parties will get only 1 minute each. Further, the scope of the debate is very narrow. It is being an amendment bill and speeches should be restricted to the class of the bill. I now call upon the members whose names have been received for participation in this discussion. Sriman Jairam Rameshji. So I'll speak in 3 minutes. Okay. Okay, others can take your seat, please. No, please, you take your seat. Jairamji, please address. Sir, no, please, you take your seat. I am coming to you after. Sir, the Industrial Relations Code 2020 was passed in the DIN on the 23rd of September 2020. We all remember what happened in the month of September 2020. By a voice vote, the 4 labor codes came into being. The Wage Code, the Industrial Relations Code, the Social Security Code, and the Occupational Health, Safety and Working Conditions Code. So today, we are amending, with retrospective effect, we are amending a law that was passed almost 6 years ago. This reflects a complete failure of the government, because this repealing should have been done when we passed the codes. We have passed the code and now we are repealing the old act. This is a bizarre proposition. I know it's because of the Supreme Court orders, but it is natural that when you pass a law, you repeal the old law.
We passed a new code in 2020 by voice vote. We didn't repeal the old act, and today we are repealing the old act. So I just want to say that these labor codes were passed without discussion in the Indian Labour Conference. The Standing Committee on Labour, which was headed by a BJP MP, has pointed out that these codes were passed without the Indian Labour Conference being called since 2015. The most significant change that this code is brought about, the amendments that we are discussing today, is that we are going to enable ease of firing. So there is no ease of hiring, but we are increasing the ease of firing. That is what we are doing with these amendments. What we are doing is weakening collective bargaining. We are weakening the role and power of trade unions. Even the Bharatiya Mazdoor Sangh has objected to this industrial relations code. So, sir, without saying anything further, because you have given me only 3 minutes, I will just say that this is inevitable that we have to pass this bill, but this bill, the fact that this bill has been brought today reflects very poorly on the government. It reflects very poorly on the fact that the original labor codes were passed by voice vote, because had there been a discussion on the 23rd of September, we would have pointed out that you cannot pass a new law without repealing the old law. The Minister for Parliamentary Affairs has been Minister for Law. He knows that you can't pass a new law without repealing the old law. So, sir, while we have to support this bill because of the Supreme Court strictures, the strictures are on the failure of the government to exercise due diligence while formulating these labor codes. I will just end by saying that these labor codes are anti-labor. There is a national protest going on today against these labor codes and the full effects of these labor codes. And 2 of these 3 bills acts we are repealing were the personal contribution of Dr. Babasaheb Ambedkar when he was labor member in the Viceroy's Executive Council. We are weakening trade unions, we are enabling ease of firing workers, we are weakening collective bargaining, and we are increasing 8-hour shifts to 12-hour shifts. So we are compelled to support this bill, but this bill is completely anti-labor. Please conclude. Ms. Dolasanji, Betaji, please take your seat. I am coming to you later. You start. Ms. Dolasanji, if you are not speaking, then I have to call the other. I am willing. Please speak. इन सितंबर 2020 जब हम सब ऑपोजिशन हाउस में बाहर थे, फार्म बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट करके सस्पेंडेड हुए थे, तब वन साइडेडली राज्यसभा में ये 4 लेबर कोड पास किया है. हम मानते हैं ये लेबर कोड नहीं, कॉर्पोरेट कोड है, जिससे सब वर्कर बिखर जा रहा है, बिखर जाएंगे. फिर भी ये गवर्नमेंट हैप्पी नहीं है, इसीलिए ये इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड को फिर अमेंड करना चाहते हैं. इसको लाया गया इसीलिए, विच इंक्लूड्स आईडी एक्ट 1947, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946. इसकी मतलब वो हमसे ट्रेड यूनियन करने का हक, राइट छीनना चाहते हैं. आईडी में जो प्रोविजन अभी भी है, कोई भी रिट्रेंचमेंट का बाद रीडिप्लॉयमेंट के टाइम पहला वाला रिट्रेंचमेंट वर्कर को पहला रीएम्प्लॉयमेंट का चांस मिलेगा, वो भी खत्म. ट्रेड यूनियन नहीं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स नहीं, कुछ नहीं. थोड़ा डिटेल्स में अगर जाएंगे तो हम बोलना चाहते हैं कि 3,300 वर्कर्स काम करते हैं. वैसा कंपनी को मैनेजमेंट जो जी चाहे कर सकते. पहले 100 वर्कर्स था, अभी 300 कर दिया, लेकिन 300 वर्कर काम करते. बहुत से लाखों करोड़ों यूनिट है. हम चाहते हैं इसके लिए कमेटी में, ऑल पार्टी कमेटी में इसका डिस्कशन हो जाए. ये सारे के सारे वर्कर्स के खिलाफ है. हम ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की तरफ से इसके सारे के सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं. हम इसके मानते नहीं. Thank you, Chairman. I am opposing this bill. This bill is anti-worker
anti-laborer, anti-employees, anti-union, anti-association, anti-federation, because the previous act, the Trade Unions Act 1926, the Industrial Employment Act 1946, and the Industrial Dispute Act 1947 had landmark legislations that provided strong principles and protective safeguards for our workers, while the Industrial Relations Code 2020 have been diluted, modified, or no longer as robust. The 2026 Amendment Bill does not restore or strengthen the interest of the workers, laborers. Sir, the fundamental rights of workers, wages and allowances, leaves, gratuity, all has been weakened. Sir, this bill will dilute the collective bargaining rights of the workers. This bill, workers below 300 will lose a statutory protection. The bill will weaken the rights to strikes of the lockouts of workers. This bill has no coverage of standing order protection. Trade union recognition, representation will hamper labor's problem. Sir, workers will lose the right to collective bargaining, workers will lose right to strike and raise their matters in the court of law. Sir, strongly on behalf of the DMK, I am strongly opposing this bill. Sriman Ayodhi Rami Reddy Alaji. I rise to speak on the Industrial Relations Code Amendment Bill 2026, which proposes to amend Section 104 of the Industrial Relations Code 2020. At the outset, I acknowledge the intent behind this bill, as this amendment seeks to address a narrow but important drafting concern, namely the possibility that the existing wording could be interpreted as delegating the power to repeal primary legislation to the executive, thereby inviting avoidable legal disputes and constitutional challenges. In principle, I have no objection to this clarificatory amendment, and I support this bill from our YSR Congress Party. Sriman Niranjan Bisiji. Sir, the Industrial Relations Code Amendment Bill 2026 is anti-workers, anti-laborers, anti-trade union, anti-employees association, anti-employees federation, because this bill has diluted, weakened, modified the basic principle of natural justice of Trade Union Act, Industrial Relation Act, the Industrial Dispute Act, Industrial Employment Standing Order Act, and this bill is meant to protect the interest of the companies and industrialist corporators. This bill is not protect the interest of the workers, employees, and laborer or trade union. Our workers will lose collective bargaining. They lose. They will depart from strike. They will depart from raise the matter in the court of law. So, this bill is against the principle of natural justice. This bill is going to be destroy the workers' interest. So, this bill, I oppose the bill. BJD oppose the bill. Dr. M. Thambidurai. Deputy Speaker, sir. Deputy Chairman, sir. Honourable members raise various points about this labour's interest. Sir, ADMK party is always for labour's interest. We are coming from our party people are lower level. Therefore, ADMK is very interested to protect the labour interest. But at the same time, even Jairam Ramesh said, even they said he was supporting the bill, he said. No, he said that means why I am telling, because of the court verdict, there is no alternative. That is why even they said. Therefore, when the court says, what can we do, sir? Therefore, because of that, we are for the labour interest. I think the government will take whatever the points others said. We are also for that labour interest. This government or Modi government also interested in the labour interest. They are not against. There were many schemes they have brought in the budget, everything. Therefore, this government is not anti-labour. But all anything. Yes. Sir, I am for the labour. Where ADMK party will have, sir. Therefore, in the respect, I hope, like Jairam Ramesh says, when the court against together for that he is supported. In that, to avoid the legal things, I am also supporting, sir. Dr. V. Sivadasan. Dr. V. Sivadasan. Please take your seat. Respected Chair, today a national strike is going on. The workers' strike is going on.
against the anti-worker policy of this government. Same day, this government is trying to introduce a new bill against the workers of the country. The workers of the country is raising the slogan for the right of the union, form the unions. The workers of the country is raising the slogan for the 8-hour shift of job, but they are trying to increase the hours of job. They are trying to reduce the wage of the employees. They are trying to attack the workers of the country. Sir, their aim to reduce the facilities of the workers of the country. They are standing only for the corporate houses. The corporate houses are making the policy of the government. This is the reality of the nation. Sir, only one thing finally I like to say here, this government, the government of the corporate, the government of anti-people government, they are not raise the voice for the people. This government is not for the people. Sir, we, the representative of the people, representative of the state, requesting the government withdraw the anti-people policies of the government. Sri Santosh Kumar P. Sir, thank you, sir. Today, millions of Indian workers are on strike. And this government is continuously ignoring the genuine voices of our workers. So the trade unions had a tremendous role in India's independent movement. And these people who had no role in India's independent movement can't accept the fact. But, sir, these labor codes are actually not for the welfare of laborers. These are completely anti-labor codes. And unfortunately, the Supreme Court of India is also in a way supporting them. And this is a clear-cut violation of the Article 14, 15, 16 and 21 of Indian Constitution. So hence I take this opportunity to request you to repeal the labor codes. This is completely anti-labor and this is against the legacy of our trade union movement. Kindly understand this and I oppose this bill. Thank you. LOP. सर धन्यवाद आपको। ये बहुत बड़ा, बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है, लेकिन इसके तरफ सबका ध्यान नहीं जा रहा। क्यों मुझे मालूम नहीं हो रहा, क्योंकि जो लेबर 4 कोड इन्होंने बनाया है उससे पूरे वर्कर्स के हकों को छीन लेने का एक साजिश हो गया है और ये पूरे लोग कॉरपोरेट लोगों से मिलके आज लेबर का गला घोट रहे हैं। मैं इस जो आप रिपील कर रहे हैं इसका मतलब कि नए कानून को आप सपोर्ट कर रहे हैं और अगर कोई का गलती से कहे कैसा मुझे मालूम नहीं हुआ, हम कभी इस रिपील जो करने के लिए उन्होंने लाए हैं गलती से लाए होंगे, देर हो गया होगा, कोर्ट ने बोला, लेकिन मैं नहीं मानता इसको, इस बिल को रिपील करके जो एक साजिश कर रहे हैं, आई कंडेम इट सर। धन्यवाद। और दूसरी बात, नहीं, मैं 5 मिनट आपको पूछा हूं सर, नो ट्राइपाइट कंसल्टेशन, parliamentary committee criticized government, Indian Labour Conference only 2 minutes not met. 2 minutes sir, माननीय चेयरमैन। नहीं, मैं I'll go ahead, please. Please. मैम देखो, मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, उसी के तहत नहीं, पहले से मतलब ये नहीं है, माननीय चेयरमैन ने आपको स्वीकृत किया। आई कांट, माननीय चेयरमैन ने स्वीकृत किया 2 मिनट के लिए, मैं वही नहीं, मेरे को 2 मिनट 3 मिनट है, मुझे जस्टिफाई करना है हाउ यू आर एक्सप्लॉइटिंग, हाउ योर पीपल आर डूइंग इट। आपकी तरफ से बोला जा चुका है, आपका नाम लास्ट में आपने लिखा, यस आई नो जयराम जी, प्लीज आप 2 मिनट में खत्म करें। I'll go by 2 minutes. 2 minutes नहीं, 300 से 100 है, ये किसको डराने के लिए? 100 वर्कर्स के बजाय आज 300 तक आप लेके गए और उसी की तरह आप जॉब सिक्योरिटी को थ्रेट कर रहे हैं। उसी की तहत एक्सपेंशन ऑफ फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट will end many permanent jobs
सब परमानेंट जॉब को भी खत्म कर रहे हैं। वर्किंग आवर्स, अरे 8 आवर्स का जो फॉर्मूला है, ये 8 आवर्स का फॉर्मूला उस वक्त बिफोर इंडिपेंडेंस बना। बिफोर इंडिपेंडेंस। आस्क डॉक्टर मनसुख मंडाविया टू रिप्लाई। नहीं, ये सर प्लीज, आई हैव ऑनर्ड 2 मिनट आपको 2 मिनट मैंने समय दिया जो माननीय चेयरमैन ने दिया। प्लीज प्लीज आप बोले आपकी बात ही जारी है। डिप्टी चेयरमैन सर, अभी सर आपने बोला माननीय चेयरमैन ने अनुमति दी थी, आपने नाम नहीं दिया था, उसके बाद मैंने बोलने दिया। सर प्लीज। रेगुलेशन कोड 2020 6 साल पहले पारित हुआ था। मुझे पता नहीं है इतना कितना उसके लिए हुआत हो रही है। उस वक्त जब इंडस्ट्रियल आपकी बात हुआ जा रही, उस वक्त जो पुराने 3 एक्ट थे, वो 3 एक्ट को उसमें शामिल करा था। पहला था ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946, द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। ये 3 एक्ट को उसमें शामिल करके एक एक्ट बनाया गया। और ये एक्ट जब इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बना तब हमें सरकार को ये शक्ति है, ये व्यवस्था दी है कि ये तीनों सरकार उसको रिपील कर सकती है। ये कोई विषय ऐसा नहीं है जिसमें डिस्प्यूट है या तो मैं कोई व्यवस्था बदल रहा हूँ, कोई नया अमेंडमेंट लेके आया हूँ। केवल एक लीगल क्लैरिटी के लिए ये अमेंडमेंट लाया हूँ। लीगल क्लैरिटी केवल इतनी ही कि 4 एक्ट है, ऑलरेडी रिपील करने का सरकार को अधिकार है ही, सरकार ने उसको रिपील कर दिया है। लेकिन भविष्य में कोई लीगल इश्यू खड़ा ना हो और कोई लीगलिटी ना हो, इसलिए केवल हम एक्ट में ये पावर दे देते हैं कि भाई एक्ट भी उसको रिपील करता है। सरकार कर ही सकती है, लेकिन एक्ट भी करे तो क्लैरिटी आ जाएगी। लीगल क्लैरिटी के लिए केवल अमेंडमेंट लाए हैं। उसमें हमने कहीं ना कोई स्टैंडिंग कमेटी में भेजने की आवश्यकता है, ना कोई हमने ऐसे कोई चेंज कर दिया है। लेकिन भी कई कमेंट आ गई, कोई आवश्यकता नहीं थी कितनी सारी कमेंट करे। 12 घंटे काम लेंगे, 14 घंटे काम लेंगे। अरे भाई 12 घंटे का सवाल ही नहीं है। हमने तो लीगल बैकिंग दिया है कि 48 आवर से, यानी कि दिन में 8 घंटे और शायद 10 घंटा करा तो 48 घंटे से एक वीक में ज्यादा किसी को काम नहीं करना है, जो ILO के रूल्स को अलाइन करा है। हमने और कुछ नहीं करा है और यही डिमांड थी उसकी। लेकिन पॉलिटिकल यहाँ बताया गया कि 300 वर्कर्स हो तो फैक्ट्री बंद कर देंगे। कोई फैक्ट्री चालू करते हो, कोई बंद करने के लिए करेगा क्या? कोई चाहेगा इंडस्ट्रियलिस्ट की अपनी फैक्ट्री बंद कर दे? बंद कर दे, बंद कर दे, बंद कर दे, यही बोलते रहे। बंद ही करवानी है सभी फैक्ट्री। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है जो लेबर का, वर्कर्स का रक्षण भी करना है, संरक्षण भी करना है और इंडस्ट्रीज को भी बचाना है। हमें इंडस्ट्रीज के खिलाफ नहीं होना चाहिए। आज दिन तक यही चला, इंडस्ट्रीज और वर्कर्स को सामने सामने रखा। कभी देश आगे नहीं बढ़ सकता। इंडस्ट्रीज और वर्कर्स दोनों के बीच में संतुलन होना चाहिए, जिसमें वर्कर्स को का संरक्षण मिलना चाहिए। ये हमने प्रायोरिटी सुनिश्चित करी है। मैंने डिटेल लोकसभा में भी उसका जवाब दिया है। हड़ताल का आप हड़ताल नहीं कर सकते हैं। कई चंद ट्रेड यूनियन ने हड़ताल बोला था, आज देखा देश की जनता ये बात को नहीं मानती है। 17 ट्रेड यूनियन ने आके कहा कि ये गलत है, कोई हड़ताल नहीं करनी चाहिए। सरकार ने जो लेबर कोड लाए हैं वो सही है, हम उसको समर्थन करते हैं। उसके फेवर में 2 सर्वेक्षण भी आ गया, सर्वे भी आ गया। सर्वे में वर्कर्स ने 60% वर्कर्स ने कहा कि हमारा हितैषी है। 15-20 लोगों ने कहा कि अभी हम समझ रहे हैं। जो जिसके लिए बना है कानून वो कहते हैं कि हम उसको समर्थन करते हैं, और जिसको पॉलिटिक्स करना है वो यहां आके पॉलिटिक्स करते हैं। यहां बताया गया कि खड़गे जी ने तो बहुत कुछ कह दिया। ये एक्ट में हमने प्रावधान करा है, आज तक वेतन कम हो जाएगा। यहां ऐसा बोला गया, वेतन कम हो जाने का सवाल ही नहीं है। आज तक एक मिनिमम वेज सरकार एडवाइजरी के रूप में तय करती थी
और एडवाइजरी के रूप में तय करने के बाद स्टेट गवर्नमेंट उसको करे ना करे, प्लस माइनस करे, कोई कंपल्शंस और कोई स्टैट्यूटरी उसके ऊपर बैकिंग नहीं था। हमने पहली बार एक कोड में ये प्रावधान लाए जिसमें हम फ्लोर वेज तय करेंगे, कोई राज्य उससे नीचे वेज नहीं रख पाएंगे, ये वेज बढ़ा के नहीं बढ़ा। वो कहते हैं कि उसमें दूसरा, यहां बहुत कुछ बोलते हैं चेयरमैन साहब, मुझे शॉर्ट में ही कहना, मैंने 45 मिनट्स लोकसभा में कहा, यहाँ शॉर्ट में 4-5 बात रख के मेरी बात खत्म करता हूँ। यहाँ कहा और बाहर जाके कहे, यहाँ जो विरोध करते हैं ना, ये 4 एक्ट से न्यूनतम वेतन की गारंटी मिलती है। अब बाहर जाके ये लोग कहे कि न्यूनतम वेतन फ्लोर वेज नहीं होना चाहिए, हम ये एक्ट का विरोध करते हैं, ये फ्लोर वेज ना तय करे, ऐसा बाहर जाके बोले। ये कोड युवाओं को भविष्य और युवाओं को नियुक्ति पत्र देने की गारंटी देता है। ये 4 कोड युवाओं को नियुक्ति पत्र देना, यानी कि किसी ने कोई जगह पे एस्टेब्लिशमेंट में कोई काम कर रहा है, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसका पेट टूट गया, सोशल सिक्योरिटी के लायबिलिटी इंडस्ट्रीज पर आई, किसी का मृत्यु हो गया, किसी को कुछ हो गया, ऐसी स्थिति में कई ऐसी घटनाएं होती है, एस्टेब्लिशमेंट इंडस्ट्रीज कहती है कि मैं उसको जानता ही नहीं। लेकिन ये 4 कोड ये सुनिश्चित करता है कि किसी को भी नौकरी मिलेगी तो उसको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, लेटर में टर्म एंड कंडीशन होगी, एक दस्तावेज बन जाएगा, कभी कुछ भी होगा तो उन्होंने वहां नौकरी करी है, ये सुनिश्चित होगा। बाहर जाके करें विरोध, युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलना चाहिए, हम उसके खिलाफ है, ऐसा जाके बाहर जाके करें विरोध। अल्लाह हो करते एक बार बताओ कि हम अपॉइंटमेंट लेटर का विरोध करते हैं, ऐसा बाहर जाके पुठिया बताए। पॉलिटिकल विरोध से कोई डिप्टी चेयरमैन साहब मतलब नहीं है। ये 4 लेबर कोड पहली बार स्टैट्यूटरी समान वेतन का अधिकार देता है। समान वेतन यानी कि कोई एक सेम काम महिला भी करे पुरुष भी करे, आज कोई उसको स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं था कि उसको समान काम के लिए समान वेतन मिले। ये कोड ने सुनिश्चित करा है कि उसको समान वेतन महिला और पुरुष को मिलेगा, समान वेतन, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। कोई महिला चाहे कि मुझे इंजीनियर हो, आज समय बदला है, आज हमारी बहन बेटियां इंजीनियर है, डॉक्टर है, टेक्नीशियन है, और वो चाहे कि मैं रात को भी काम करना चाहता हूं, वहां जो पूरी सेफ्टी का प्रबंध हो, और वो काम करना चाहे तो उसको काम करने का भी अधिकार देता है। और किसी ने करे ना वो विरोध, कभी किसी ने ओवर टाइम करा, कोई किसी को कुछ काम मिला हो और काम करते और उन्हें 8 घंटे से ज्यादा काम करा है, तो उसको डबल वेतन की नरेंद्र मोदी का 4 कोड गारंटी देता है, उसको डबल वेतन देना पड़ेगा। वो बाहर जाके करे विरोध कि डबल वेतन का विरोध कर रहे हैं, पॉलिटिकल विरोध करते और फिर भाग जाते, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। ये 4 लेबर कोड, डिप्टी चेयरमैन साहब, बीमारी तो कभी किसी को पूछ के नहीं आती, तो गरीब के यहां भी आती है, अमीर के यहां भी आती है, मजदूर के यहां भी आती है। कोई श्रमिक के यहां कोई बीमारी आ जाती है, वो सारे दिन काम में रहते हैं, सुबह से शाम तक काम करते हैं, परिवार की जिम्मेवारी होती है। ऐसी स्थिति में छोटी मोटी बीमारी को उपेक्षा करते हैं। आज कैंसर जैसे डिसीज में 3rd स्टेज में जब डिटेक्ट होगा ना, तब जिंदा रहने की शक्यता संभावना कम हो जाती है। और कई हमारी महिला को ब्रेस्ट कैंसर पहले 1st स्टेज में होता है, तो उसको लगता है कि छोटा मोटा दर्द हो रहा है, वो उसको इग्नोर कर देती है। ये हमारा लेबर कोड देश में 40 एज से एबव कोई भी श्रमिक हो जिसकी एज 40 से एबव हो गई, साल में एक बार हेल्थ चेकअप की गारंटी देता है। 4 साल में एक बार उसका हेल्थ चेकअप करना है, ताकि कोई छोटी मोटी बीमारी हो तो तुरंत ही डिटेक्ट हो जाए, डिटेक्ट हो जाने के बाद उसका इलाज हो जाए, वो स्वयं बच जाए, उसका परिवार बच जाए। ये बड़ा विचार करके मोदी जी ने ये लेबर फॉर्म के रूप में 4 लेबर कोड के रूप में बड़ा रिफॉर्म करा है। डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, कई लोग ऐसा ही मानते थे। अभी मैं राज्य लोकसभा में एक रिप्लाई करके आया, अभी ESIC की हॉस्पिटल होती है, कामगार बीमा निगम की, उसमें मैंने प्रधानमंत्री जी ने मेडिकल कॉलेज चालू करना तय करा कि जो 200 से अधिक बेड है वहां मेडिकल कॉलेज दी। उसमें कामगार के बेटे बेटी को रिजर्वेशन दिया गया, मजदूर के बेटे बेटी को रिजर्वेशन दिया गया। ये काम हमने करा।
जो अभी यहां से कई मेरे कम्युनिस्ट साथी बोल रहे थे चिल्ला चिल्ला के हम उसका विरोध कर रहे हैं, मैं उसको कहना चाहता हूं, ऐसी एक मेडिकल कॉलेज प्रेमचंद्रन जी के कहने से हमने केरला को दी, उनके लोकसभा क्षेत्र में थी। प्रेमचंद्रन जी ने कहा था